आह, कैसे हो दोस्तों। आपका स्वागत एक और शानदार गोस्ट स्टोरी स्ट्रीम में। थोड़ा मेरा टूथपेस्ट में नमक नहीं है शायद। आओ जगू दादा, आपका स्वागत। क्या बात है। थोड़ा अभी इसमें टाइम जाएगा। हाँ, देखो 9:30 स्ट्रीम, 9:29 को सर अपना कंप्यूटर ऑन करता है और अभी फिर ऐसे ऐसे करते क्या। ए, ए, मेरा मुंह के अंदर गया। गुड हैपनिंग्स एवरीबॉडी। हाँ सुरेश जी, क्या हुआ, आपको सुनाई नहीं दे रहा? वो डोंगल डाला आपने कंप्यूटर में? कंप्यूटर में डालना चाहिए आपको सर। आप डाल दो जिधर भी डालने का आपको वो, फिर बस साउंड आना चाहिए। आप चेक कर लो। सब ठीक ना सुरेश जी? अच्छा सुरेश को सुरेश जी सब ठीक है ना उधर? अब ओह, आप मेरे हाँ। पर प्रैंक खेल रहे थे। नहीं, आप अपने खुद के ऊपर आप प्रैंक कर रहे थे सर। नहीं, अचानक कैसे चालू हो गया है? तो अभी तक चालू नहीं था आपका, आपकी आवाज मेरे आप तक ये नहीं वेरी पहुंच रहा चालू था। सर, बहुत चालू है आप। हैं? एनीवे सुरेश सर, आपका स्वागत एक और बार। थैंक यू सो मच, आप आते रहते हैं यहाँ पे। अब होगा डोंगल। गेट इट सर, डोंगल। हाँ। आप तो सुन भी नहीं रहे, फॉरगेट नहीं, गेट इट। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा। मेरे को भी दे। हाँ, कीवी कीवी फ्रूट, कीवी फ्रूट दे रहा हूँ। एनीवे गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत, वेलकम टू दिस अद्भुत खेल विच इज कॉल्ड गोस्ट स्टोरीज। पता नहीं तुम लोग का क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग यहाँ पे क्यों वापस आते रहते हैं। बट टू द पीपल हु आर स्टिल हियर विथ अस, दिस इज द 81st और 82nd एपिसोड, मेरे को खुद पता नहीं, बट तालियां सुरेश इन लोगों के लिए। तेरे से भी बड़ा हीरा लोग है चैट में, आप समझ रहे अच्छा। हो? अच्छा। लिंक्डइन चेक कर रहे हैं हम। नहीं, वो मेरा एक पेमेंट का इश्यू हो रही है। हाँ अच्छा। तो वो बिग रॉक वाले क्या करते हैं ना, वो लोग को ऐसा रिक्वेस्ट दे रहे हैं जीपे में, लेकिन वो लोग बोलते भेज दिया है, ठीक है सर, लेकिन एक अभी तक सेकंड ना, आई जस्ट वांट आया टू नहीं टेक है। दिस अपॉर्चुनिटी टू से कि लोग पूछते हैं कि प्लीज बैंटर मत निकालो। ये है बैंटर जो कॉल के बीच में सिरिल और सुरेश ये सब करते, तो मेरे को एडिट करना पड़ता है अभी, और फिर मैं अकेला इधर अपना चैनल पे गाली खाता हूँ। सर आप तो व्यस्त होके निकल जाते हो। ओ व्यस्त तो नहीं, एक सुनिए। डोंट बी ए बैंटर, टेस्ट द टैंटर, टेल मी विच एड दिस इज फ्रॉम। गॉड आई हैव नो आइडिया। बट सुरेश जी, शुरू करने से पहले मैं द ला एक एक बहुत ऑफ बढ़िया कोर्स। चीज आपसे, बढ़िया नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूँ आप लोगों से, कि ये जो हाल ही में हमने देखा जो विवाद उठा हुआ है, कि जो सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट कर रहे हैं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, और उनके ऊपर केसेस टोपी जाती है। मुझे लगता है कि इसमें बट वो एक सेकंड, ठोकी जात किसने डाला केस? किसी ने नहीं नहीं, डाला थोपी केस। जाने जो भी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ठीक लोग भी है। अपनी तरफ से करेक्ट है, तो एक काम करना चाहिए, आज से सिर्फ ऑनेस्ट एड्स बनाने चाहिए। ये अरे प्रोडक्ट मैंने यूज किया ही नहीं, लेकिन मेरे को पैसा मिला। हाँ, वो ऐसा बोलना चाहिए वो लोग, जैसे इंस्टाग्राम पे जब कंपलसरी बोलना पड़ता है कि हम ऐड कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे कि अरे भाई लोग तुम लोग ये खा लेना बहुत टेस्टी है, तो क्या करना बट चाहिए कि सुरेश जी, आपको पता है मैं कितना रिसर्च करता हूँ? हाउ बिल्कुल आप मेनी साइकिल एड्स, हाउ मेनी आई सेड नो टू, बिकॉज मेरे को पता नहीं था कि टायर कैसा वगैरह। करेक्ट, लेकिन क्या मैं कर भी रहे सर? बहुत रिसर्च कर, मैं कीवी फ्रूट कर रहा हूँ। सर ये गोस्ट स्टोरी स्ट्रीम है, आपको करे क्या, करे? ओह, हाउ यू बीन मैन सुरेश? आई हैवंट सीन यू इन सो ए लॉन्ग, जस्ट कितना वन कैसा है वीक। रे? या लेट्स प्रेटेंड लाइक माय फ्रेंड्स नाउ। और फिर हाउ आर यू? ओह शिट। So let's set the ball rolling and start to dive deep right into the ghost stories right now. What do you say? क्या बात है, क्या बात है, ताली। और ये तेजी से Yeah, पहला गोस्ट, अरे डिड आई फॉरगॉट टू पुट द लिंक यार। oh, there you are. देखो तुम लोग का चक्कर में मैं भूल गया वो लिंक डालना। एनीवे नाउ यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू विल फाइंड द लिंक टू दिस जूम मीटिंग। वेयर यू सी योरसेल्फ इन 5 years? Oh, Doing ghost stories. uh, no. Alright. मिस्टर सुरेश मेनन और सिरिल डियाब्रियो ने प्रॉमिस किया है, हालांकि 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 सिरिल सर यहाँ पे है नहीं, लेकिन दोनों ने प्रॉमिस किया कि मीटिंग करेंगे इन पर्सन। उनको जूम पे लाने में इतना तकलीफ होता है, इन पर्सन, बट इन पर्सन बोला है कि कान मस्ती फिर से शुरू। क्या बात है, इतनी बड़ी बात।
मैं ऐसी तो कैजुअली सर? एक सेकेंड एज मेंबर चेयरमैन ऑफ द कमिटी आई वाज नॉट इन देयर फॉर द मीटिंग, हाउ डिड यू ऑल डिसाइड? अरे वो व्हाट्सएप ग्रुप तुम लोग अच्छा अच्छा ठीक है तो सुरेश, बट सुरेश जी क्या अरे बात है, देखो मेरे सिर के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स है, मेरे पेट के ऊपर आज मिला मेरे को। एनीवे छोड़ो। खुश गुप्ता से होजे भाई और सुरेश सर, हीरा हो आप, थैंक्स वीकेंड को एंजॉयबल बनाने के लिए। या थैंक यू। कोशिश तो करेंगे। आओ क्या क्या नया चीज खेला है मैं, सुरेश सर पूछो। अरे बोलो क्या क्या नया चीज किया आपने उसे जी? कुछ नहीं, ऐसे एक्सेलेंट, अब सिर्फ ये हम सुनना चाहते थे, ये हम सुनना चाहते थे। the average age has gone down to 12 here with the two of us over here. Go to the description of this video, click the link, come here, hang out in the waiting room. हम आपको अंदर लेके आएंगे. You can tell us your ghost stories. Right now we have Atharva. ओह sorry आपको मारा मैंने. And see सुरेश जी, आपको पता है ना, sometimes some stories people call us and say कि वो भूत ने उसको चाटा मारा, वो भूत ने पादा उधर, भूत भूत पानी वेस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ। So what I did is I got desperate and I googled. I googled scariest ghost stories ever. I don't know हम्म। what you guys look for, but I found a link. तो बीच बीच में एक एक करके एक एक स्टोरी हम लोग बताएंगे आपको, वो स्कैरियस्ट एवर, एंड दे हैव साइटेड देयर लिंक्स एंड ऑल, किधर सोर्सेज है, तो सही है। हेलो अनुरिमा जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे घर के ऊपर था, मैं हूँ अक्षय कुमार, गोइंग टू द बार, वेरी फार। बस माय न्यू सिंगल आउट नेवर। तो शुरू करें सर? बिल्कुल शुरू कर। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हूँ क्योंकि एक अच्छा, पेमेंट वी करने के नेवर चक्कर नोटिस। फिराक में हूँ और ये पता नहीं जी पे क्या? अच्छा, आई थॉट वो शॉर्ट फॉर्म में आप बोल रहे हैं। बहुत ही मतलब आई ये वो अच्छा है, पी फोन पे, जी पे। तेरा जी पे हम्म। गया, नो स्पॉन्सरशिप फ्रॉम गूगल एवर। तेरे वो लोग क्या बोल रहे नहीं थे, बट हमारा जी प्रोडक्ट पे, है जी पे, जी के कर दिया। नहीं नहीं अच्छा है लेकिन जीपे आई ऑलवेज यूज जीपे। लेकिन यार जीपे वाले को सिर्फ एक बार मुझे वो 1,000 रुपया तो दिला दो। अवार्ड में जाता है ब्लू ऐसे ऐसे स्क्रैच करता हूँ। मतलब बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नॉनसेंस। जब तक हमारा पर्सनल स्टोरी स्कैरी आएगा, फैन चल रहे ऊपर, वो भी है। हेलो सर, आपका स्वागत, आपको अनम्यूट करेंगे। खुश गुप्ता, सम मोर फंडिंग फ्रॉम माय साइड टू स्टार्ट कान मस्ती। अरे बाप रे, क्या साइड बिजनेस क्या कर रहे हैं, कितना पैसा? थैंक यू, आप कितना पाई लागू, थैंक यू। पर्सनल स्टोरी स्कैरी, आर वी ऑडिबल? Yeah, स्पॉटिफाई, yeah. हाय, Yeah. Am I audible? वेरी स्पॉटिफाई। Yeah. First of all, I'm a big fan, Jose and Suresh, ओह, both of you. Thanks for inviting me. This is my first attempt at joining the, because I've been a ए, regular viewer, but ऐसा I've बोलने का नहीं, never, किसी को बताने का नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं होता है, नहीं, किसी पे 10 बार। मेरा मतलब मैं पहली बार मैंने जूम लिंक पे क्लिक किया। मैं पहले पहले से देख रहा हूँ, आपका स्ट्रीम बहुत मस्त है, थैंक वेरी यू सर। गुड। मैं सैटरडे का वेट करता हूँ कि आप लोग का स्ट्रीम क्या बात अरे है, ज्वाइन कर सकूँ। थैंक यू ओके, थैंक यू। आई विल गेट टू माय स्टोरी। प्लीज। एक्चुअली द थिंग इज दैट ये कहानी मेरे कॉलेज टाइम का है। ओके। और तो मैं तो क्या हुआ था कि मेरी माँ की जो मदर थी, मेरी जो ग्रैंड मदर थी, वो एक्सपायर हो गई थी, मतलब मर चुकी थी। ऑलराइट, और वो सॉरी टू हियर हमारे दैट। साथ ही रहती थी हमारे घर में। मैं सेकंड फ्लोर, मतलब मेरे टॉप फ्लोर पे था। मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई और बाकी सारे नीचे रहते थे। तो मेरी ग्रैंड मदर का डेथ हो गया और 1-2 महीने ऐसे गुजर गए। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं, तो उसमें क्या होता था कि मेरे को, क्योंकि हमारा जो टॉप फ्लोर थोड़ी ऊंचाई पे था, मतलब थोड़े स्टेयर वेयर की जाने थे, तो मेरे पापा ने क्या किया था कि कॉलिंग बेल अरेंज कर दिया नीचे, सो दैट जब भी मुझे कॉल, उन्हें मुझे बुलाना होता था, दे वुड सिंपली प्रेस द बेल और वो मेरे यहाँ बेल बज जाता था। मैं सुन के, मुझे पता चल जाता था कि कोई मुझे नीचे बुला रहा है, मैं नीचे चला जाता था। शहर से मैं चला जाता था। लेकिन शहर में ऐसा था कि मेरे रूम से, दरवाजे से मैं उतर के, जब भी पहले एक लैंडिंग आती थी, उस लैंडिंग पे एक राइट टर्न लेके मुझे नीचे दिखता था, हॉल दिखता था, डाइनिंग हॉल, जहाँ पे डाइनिंग टेबल था, कुर्सियां थी, और उस डाइनिंग टेबल से सटा हुआ था जो बेल, जो स्विच बोर्ड था, उस पर बेल था। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी को अगर स्विच बोर्ड एक्सेस करना है तो डाइनिंग टेबल
को मतलब कुर्सी वुर्सी से हटा के उसको स्विच बोर्ड एक्सेस करना है। मतलब अंधेरे में कोई वहां नहीं जा सकता है क्योंकि कुर्सी से वो टकरा जाएगा, कहने का मतलब ये है। ओके, सो एक दिन क्या हुआ कि मैं रात को डिनर कर लिया, मैं चला गया ऊपर और 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे मैं सो गया। फिर क्या हुआ कि मैं ऐसे मतलब सोते रहता हूँ, डीप स्लीप है मेरा, मैं ऐसे जगता नहीं हूँ। सो गया तो सो गया, फिर सुबह उठूंगा। लेकिन क्या हुआ कि और मेरा एक बात मैं बोलना भूल गया कि ये जो कॉलिंग बेल है ये नहीं कि कुकू 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 एक आवाज नहीं है, ये एक लंबा चौड़ा कुछ गाना टाइप है, मतलब फिल्मी गाने हाँ वगैरह हाँ, हैं लाइक वो तो गाड़ी लंबा रिवर्सिंग चलता का है। साउंड आता है वैसा। हाँ वैसा नहीं है। ओके। तो फिर क्या हुआ कि मैं सो रहा हूँ, मुझे आवाज सुनाई दिया कुछ। हाँ। आवाज सुनाई दिया क्या, मैंने मतलब ध्यान से देखा तो मेरा कॉलिंग बेल बज रहा है। रात बहुत लेट नाइट हो चुका है। तो मैं ऐसे मतलब 10 सेकंड मैंने कंफर्म किया कि क्या मेरा बेल बज रहा है कि नहीं। आई वॉज मेकिंग श्योर कि कई बार क्या होता है कि वी फील लाइक इट्स, क्योंकि कई बार हम सुनते उस बेल हमेशा बजते रहता है तो वी फील लाइक इट्स रिंगिंग बट ऑल्दो इट्स नॉट रिंगिंग, जैसे हमें एक फील होता है। लेकिन मैंने कंफर्म किया कि यस मेरा कॉलिंग बेल बज रहा है। रात का अंधेरा है, मतलब 2-3 बज चुके हैं, मैंने फोन में देखा 2-3 बज चुके हैं, कॉलिंग बेल बज रहा है। मैं पता नहीं क्या हो गया, मैं तो सब कुछ हो गया, क्या हुआ, चोर वोर आ गया, क्या हुआ, मम्मी पापा नीचे हैं, कुछ हो गया, क्या हो गया। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सीधे बेड से निकला, उतरा, दरवाजा खोला, सीढ़ियां पहले जो स्टेयर्स हैं वो कवर किया और नीचे पहली लैंडिंग पे पहुंचा। जब मैं पहली लैंडिंग पे पहुंचा और मैंने देखा नीचे, तो डाइनिंग रूम अंधेरा है, मतलब कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल अंधेरा। और पॉइंट ये है कि उस स्विच बोर्ड को एक्सेस करने के लिए बिना लाइट डाले कोई स्विच बोर्ड एक्सेस ही नहीं कर सकता। और मैंने देखा कि पूरा अंधेरा है। मैं लैंडिंग पे जाके मुझे पता चला कि भाई कोई प्रॉब्लम है, किसी ने बेल नहीं बजाया है, या तो पता नहीं कोई इश्यू है। मैंने सोचा शायद मुझे लगा होगा, मुझे ऐसे मतलब फील हुआ होगा कि बेल बजा है। मैं फिर सोचा, मैंने 10 सेकंड वहां रुका, मैंने अंधेरे में देखा और मैंने आवाज सुनी, कुर्सी हिलने की आवाज मैंने सुनी कि कोई कुर्सी हिला रहा है, किर्र, ऐसे मैंने एक आवाज सुनी। आई एम स्टिल फीलिंग गूजबम्स, मेरे हाथ में गूजबम्स है। ये ऐसे बोलते ऐसे। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही साउंड, ब्लेस यू यही सुरेश। साउंड, यही साउंड। और मैं अरे भागा वहां से, मैं सीधे अपने रूम में गया, दरवाजा बंद करके मैं वहीं बैठ गया। मैंने फिर किसी से कुछ नहीं कहा। मैं अगले दिन सुबह मैंने मम्मी से पूछा, रात को कॉलिंग बेल बजाया था आपने? उन्होंने कहा नहीं, हम क्यों बजाएंगे, रात के 2-3 बजे हमें कॉलिंग बेल बजाने की क्या जरूरत है, हमने तो कॉलिंग बेल नहीं बजाया। तो उस दिन के तो बाद मैं दैट्स इट। कॉलिंग बेल बजाए ना बजाए, मैं नीचे नहीं जाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो कॉलिंग बेल का दिस उल्टा इफेक्ट हो गया। इट कुड हैव जस्ट बीन एन इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शन आल्सो ना, हो सकता है। हो सकता है, नो, उस आई डोंट नो। वो तो फिर बैटरी में कुर्सी कुर्सी बैटरीज। कैसे ली, अच्छा कुर्सी कैसे ली? कुर्सी, अच्छा कुर्सी वो अलग है। कुर्सी कुर्सी का एक्सप्लेन है। कुर्सी, see, I got a better explanation maybe. So this house where you were, is it a flat or is it a नो, इंडिविजुअल हाउस, अपना अपना individual घर house? है। Correct. So यस यस। maybe a rat or something ran up on it and it rang the bell. Okay. And to explain your furniture case, sometimes there's something known as metal and furniture wooden fatigue, they call. मेरा ओके, So फटीक। that could be a noise, sound, or कुड बी सुरेश सर maybe या एक और बार somewhere. सुनाइए ना आपका एक स्टूल का। सेकंड, ये देखिए, ठीक सुना है, आपने? आपका माइक वहां तक नहीं जा रहा, बट हम सुनते रहते हैं, स्ट्रीम पे आता रहता है नहीं, ये आवाज। ये वाला ना, अभी जो आया वही ना। पहले जो आया था एग्जैक्टली वैसा साउंड था, एकदम हाँ, लंबी ओह तरह माय से खींचा गॉड गया। हाँ निधि, करेक्ट। व्हाट आर यू सेइंग? नो नो, बट समटाइम्स ना सुरेश, ये दूसरा घर का आवाज ऐसा लगता है कि अपना घर में हो रहा है। No, he's in an independent house and they are not in flats. So flats में like I could have told कि ऊपर वाला ने कुछ कोई चल के गया, तो he's got a point there, but we are just trying to help you, brother. So don't mind it. वी आर ट्राइंग टू हेल्प या श्योर श्योर आवरसेल्व्स, श्योर। क्वाइट फ्रैंकली हम लोग को Because सोने का है रात को ना, इसलिए। yeah, ओके, प्रणय बोल रहे बॉम्ब हुआ जोक, मेरा सब जोक बॉम्ब ही होता है। एनीवे, पर्सनल स्टोरी, थैंक यू वेरी मच, वेरी थैंक यू, काफी थैंक्स स्कैरी। सुरेश, थैंक्स। thank you ओके, so बट much. आई हैव एन आइडिया फॉर यू, थैंक्स। इफ यू टू मेक श्योर ना 100%, वो आप ब्लू टैक लगा सकते हैं अंदर एवरी चेयर इन द हाउस। ब्लू टैग वो क्या, ब्लू वो टैग कभी मतलब? हिलेगा नहीं, वो या वो स्लाइम की तरह रहता है ना, वो अच्छा चिपका अच्छा, दो। ओके आप सब ओके चेयर को चिपका दो Oh, बेसिकली। nice, ओके nice. ओके, That's a good idea for a change. क्या या टाइम आई पास है। डू दैट, आई डू दैट। ऑलराइट ब्रदर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बाय Bye बाय, bye. टेक See you. केयर। Bye bye. Bye. इज लाइक मैं सिंपली ज्वाइन किया, इधर ये लोग बोल रहे हैं ब्लू टैग डालो चेयर के नीचे। घर से मार पड़ेगी वो अलग। ओके, यस, मेरा स्ट्रेच मार्क्स, यू से ये
मेरा stretch marks. You say, yeah, मेरा stretch marks. See, yeah, Harry Potter. Yeah, Harry Potter. I thought कि मेरे पास राइम था बट नहीं था. याशना मलिक, थैंक यू सो मच अपना मैसेज के लिए. रॉबिन डी, कोई सिरिल का रिश्तेदार रहेगा. सिरिल डी, गेट इट. होजे, where you see yourself in 5 years? मी स्ट्रीम चालू रखो प्लीज, यही मिलेंगे. बहुत ही फनी मैसेज. शिवास्तुति says love you guys. मुई 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 परिणीति के स्टाइल में. समृद्धि पाटिल, we need more कान मस्ती, don't tease us like this. होजे, hey, वोल्डेमॉर्ट का जस्ट चेकिंग. सुरेश सर का ऑर्डर आया है. क्या कर रहा है सुरेश को, सिर्फ सुरेश को भी पता नहीं. नितिन सिंह गौतम, चेयर की आवाज के बहाने सुरेश सर 3 बार पादा. आधा पादा कौन पादा, मामा जी का घोड़ा पादा. क्या था? दुस पादलीस तुस. Okay. So Suresh, now here we get to, this is now where after 81 episodes we're trying to change things a bit. That's how slowly things work over here. But so we're taking your story, personal story. I see you, Rahul, Atharva, Mithil, Kerala ghost story, Shashank, witchcraft story and ghost story. काफी innovative naming, but आप लोग को लेके आएंगे एक करके एक. Suresh, you remember Reader's Digest? Of course. Only we remember Reader's Digest. Who else is in Huge the fan 80s? of Reader's Digest. But later on they came up with this whole thing of they used to send you subscribe now and you can win $1 million and all this stuff. Continuously आता था. मैं Bro, कितनी बार उस चक्कर में subscribe किया, but then I got my hooked onto it. my mom has preserved all the old Reader's Digest. वो used to be like about Hey, that big, right? Yeah, And they're all yeah. in the Goa house. I told her, please preserve them. Anyway, back to this thing. 12 real ghost stories that will send shivers down your spine. Okay. Are you ready? No. Are you ready? So आपका calls लेंगे और बीच बीच में out of desperation we're gonna read some stories from the internet. Sharvari Gurau not earning so छोटू super chat. Love you guys. You all have no idea how funny you are. Thank you so much. कितना sweet हो आप. मत आप प्लीज यार सेव करो, थोड़ा सेविंग भी करो. आपको पता है ना दुनिया में क्या क्या नहीं चल रहा है आजकल. Anyway, हो रे वाह. इतना emotion. Are you ready, Suresh sir? I'm ready. तो शुरू करते हैं. I'll just bring my stories face. अरे Alright. thanks. क्या हो गया आपको? Ready? अरे कीरा ने कुछ कहा है. कीरा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा. हो रहा है कि सुरेश आज बहुत पैसे की बात कर रहा है. पेमेंट कर दो. Hey, माहौल सर, ये सब मैं ये को करना पड़ रहा है because of माहौल. That's equally. Oh, okay, tell me. Are you ready? This story is called I'm ready. Hey, Somdatta. रुको. I need an assistant just to take pictures of the super chat so I can read them later. Somdatta will come back. Waldermont आपका मैसेज पड़ेगा, लेकिन अभी मैं हूँ. क्या नाम देंगे आप मुझे? Zambi. सुरेश, I love you. प्रदीप शेट्टी. जाम्बी. हेलो, मेरा नाम जाम्बी जी है और मैं आपके लिए स्टोरीज पढ़ूंगा. नमस्कार. So like I said, I'll drop a link to this on our Discord and also in the comment section. This is an article by Reader's Digest. I need to have a separate person deal with super chats. कितना sweet. Hey, it's recording a video. The super chat नहीं. ठीक है. The Little Hands. Are you ready, Suresh? Yeah. I've never lived in a haunted house, but my mother did as a teen, writes Reddit user Patented Spacehook, recounting a true event. Other houses on her street had strange things going on too. A few homes away from her lived a family. The 3 bears would go and eat the porridge. I'm just joking. One night, the daughter went to bed with a bad headache. The next day, she was dead. She passed away from an aneurysm. Just checking if you're listening. Clearly you're not. After the funeral. My aneurysm is something like a normal cold. No? Correct. Yeah, maybe. After her funeral, the family went away to get their minds off the tragedy. And the father asked my uncle, who is her mom's brother, to check on their pets. My mom and dad, who were dating at the time, went with him
My mother had heard that there was a grand piano and she wanted to play it. My dad was studying to be a veteran. After entering the house, my uncle and my Veterinarian. Veteran, you can't just... he's not a veterinarian, he's a veteran. Oh, veterinarian. Yeah, Veterinarian, like ventriloquist. thank you Please, so much. Veteran, how can you study to be a please, veteran? please, Yeah. please. After entering the house, my uncle and my father headed to the basement to see the animals, and my mother went to the piano on the ground floor. She was playing it when she felt something brush her ankles. She thought a cat must have left the basement and walked past her. Thank you, Suresh. Mahal ki maa chudre. She kept playing, and then she felt the brush again. She looked under the piano and saw nothing. When she started again, she felt hands clasp her legs tightly. She dashed to the basement door, calling my uncle and father, and waited for them. Back outside, my uncle could tell my mom was rattled and asked what was wrong. She told him what had happened, and he turned white. He told her the daughter who had died used to play a game with her father, and when he played the piano, she'd crawl underneath, grab his ankles, and push his feet up and down on the pedals. The end of that story. Oh. Now you can make the cat noises, sir. Thank you very much. I was giving you such lovely background music. So तो माहौल बना रहा और तू यहाँ पे यार तेरे को कदर ही नहीं ना. Sir, एक नहीं 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 अरे तो कुछ पायलू तो और क्या रात लगा नहीं ठीक. क्या बात भाई मैं ट्रांसलेट करने में टाइम लग जाएगा. ये उनका आर्टिकल ही अंग्रेजी में. आप थोड़ा नहीं एक सेकंड मैं समझा नहीं. ये किसी ने आपको भेजा पढ़ने के लिए? नहीं, मैंने खुद गूगल किया. अच्छा ठीक है. वही तो लोग करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी. अच्छा ऐसा. Oh, Suresh, would you like Kerala ghost story or Mithil recent ghost experience? Chat, which one would you like? मिथिल केरला गhost स्टोरी. पहले मिथिल सुनते उसके बाद केरला ghost स्टोरी. ठीक है. Oh, रीसेंट वाला नहीं है इसके लिए. ठीक है. Recent ghost कब? Mithril from Rings of Power. So I am actually trying to find out कि ये कितना मतलब कल परसों हुआ. ऐसे भी ghost stories होगा ना कि कल ही देखा. If they can also come on the stream and tell us, no? We saw the ghost yesterday only, man. What man baga? मित्रिल चला गया. Mithril was like तुमचा मित्रिल नाही. Kerala ghost story. Kerala. Let's go. Suresh, are you gonna try it? Are you gonna try it when he comes on, whoever this person is? Yes, of course. बोलेगा? Special words. You have a T-shirt of it now. नहीं, so केरला में इंसुलर नहीं बोलते बेटा. Oh, just check. Hey, not yet unmuted. ഒരു മിനിറ്റ് പോരെ അവിടെ. Hi. Hello. Hi. Can you hear me? We can hear you loud very and clear. clearly. Hi, Yuko. Hi. Hi, Huku, hi. Oh my God, this unbelievable, guys. So good to see you, Suresh. Hi, Hoezaay. Hi. ये फैमिली गैदरिंग बन गया Oh my इधर. God. और फिर घर पे मम्मी हाँ, सच्ची. तो सब Where are you in Cochin? In Kochi or? No, actually, right now I'm in Mumbai, but the story that happened was in Kerala. All right. Okay, great. क्या रेटिंग देंगे आप अपना स्टोरी को? So मुझे हरामी चैट के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो मैं अपने आप को खुद सेल्फ लो रेटिंग ही दे रहा हूँ. तो ठीक जाते हैं हम. Under promise, over deliver. Yeah, always better. ऐसे तो मैं कुछ ठीक है, चलो ट्राई करते हैं. तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में रखूं पूरी ये कहानी, बट आई वुड से माय इंग्लिश इज मच बेटर, सो लेट्स जस्ट से. ओके, सो कहानी शुरुआत होती है जब मैं 5 साल का था, जब मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इस बार हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो समर वेकेशन है हम केरला में स्पेंड करेंगे. तो जो भी केरला के उनको पता है कि हम यूजुअली वी हैव लाइक बिग एंसेस्ट्रल होम्स एंड यू नो बिग फैमिली देयर. सो आई वाज प्रीटी एक्साइटेड थिंकिंग कि मैं अपने कजिन्स के साथ स्पेंड करूंगा टाइम, उधर जाके खेलूंगा उनके साथ. तो काफी एक्साइटेड था. बट कहानी के अंदर जाने से पहले मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप एक भूत की कहानी सुनते हो और शैतान की कहानी सुनते हो, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि किस चीज पे विश्वास करें, कि शैतान तुम्हारे सामने आया उस चीज पे या तुमने शैतान को देखा उस चीज पे. किस चीज पे विश्वास करें समझ नहीं आता. तो ये जो सवाल है जब मैं 5 साल का था तब मेरे माइंड में आया.
क्योंकि हुआ ये कि मेरे कजिन्स जो थे तब वहां पर एक भूत का शो देखते थे विच वाज वेरी फेमस कॉल्ड कडमुत्तत्ते कत्तला. It was basically ghost hunters dipped in holy water. It was very Catholic. It was about a priest who would go on ghost hunting. So it was really hilarious. So I was obsessed with that show. मतलब बचपन में वो तो देखने में बड़ा मजा आता था. तो वैसे ही एक रात मैंने वो शो देखा और यूजुअली मेरा भाई मेरे साथ रहता था फॉर लाइक सपोर्ट, बट इस बार नहीं था. तो वो जाके सो गया और मैंने ये शो देखा अकेले में ही. एंड फिर जब शो खत्म हो गया तो ऑफ कोर्स समर हीट, everything is very humid and like hot. तो my mom is like, okay जा विंडो खोल दे, वहां बैठ जा, तेरा भाई भी सो गया, तू भी जाके साइड में सो जा. तो मैंने विंडो खोली और मैं अपने भाई के साइड में जाके सो गया. एंड मैं अपने भाई को इरिटेट करने की कोशिश कर रहा कि उठ बात करते कुछ करते, मतलब इरिटेट करने की कोशिश कर रहा था, बट कुछ हुआ नहीं. बट फिर मैं वहां पर बैठा और मैं बस खिड़की के बाहर देख रहा था. एंड केरला का हाउसेस का स्पेशलिटी ये है कि आसपास कुछ भी नहीं होता. Like it's completely secluded and there are no buildings or by lanes or roads. और ऐसा नहीं था कि हमारे घर एकदम बोलते हैं ना रोड्स के पास था. तो suddenly when I'm looking at the window एक हाथ आता है. And I'm not sure if it's a hand or if it's a long claw. एक बहुत ही बड़ा हाथ आता है which is totally burned, like completely burned. And धीरे धीरे वो हाथ अंदर और creepy होने लगता है मेरी तरफ. बट जैसे कि मैंने कहा, आई वाज ऑब्सेस्ड विद हॉरर शो, तो वो फियर रजिस्टर नहीं हुआ. थोड़ा टाइम लगा फियर रजिस्टर होने के लिए, बट फाइनली मेरे मुंह से आवाज निकला एंड आई वाज स्क्रीमिंग एंड आई रैन आउट टू टेल माय मॉम कि आई सॉ समथिंग एट द विंडो. एंड मेरे घर वाले ऑफ कोर्स 5 साल का था तो बोला कि येड़ा है, बचपन में हॉरर शो देखता है, कुछ भी बकवास कर रहा होगा. बट आई वाज नॉट किडिंग आई गेस. मेरे डैड और मेरे अंकल जो थे वो लोग बाहर गए खिड़की के बाहर एंड देखा कि फुटप्रिंट्स था, 2-3 फुटप्रिंट्स था वहां पे. बट ये हो सकता है कि उनमें से किसी का भी फुटप्रिंट हो सकता है, कि हमारे घर वालों में से किसी का भी. बट वी नेवर नो. बट इतना मुझे जरूर याद है कि इट जस्ट स्मेल्ड वेरी वियर्ड आफ्टर दैट इन दैट पर्टिकुलर रूम. एंड मुझे बहुत विविडली याद है कि मैंने वो हाथ देखा था. सो इट वाज रियली स्कैरी फॉर मी एज अ 5-year-old, बट नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट्स नॉट एज स्कैरी. इट कुड हैव बीन जस्ट सम रैंडम. It could But have yeah, been some that was the shadow of story. a leaf also, because वहाँ पे the shadow plays terrific because there's such a lot of coconut leaves, and sometimes when the moon comes through it, it actually feels as if a hand is coming, and वो leaves भी रात को ऐसे घूमता रहता हो सकता है, But the completely possible. like we've discussed, the mind plays more tricks on you. Or it could be especially someone made tandoori chicken, didn't like it, and they just threw it at your window. that. Well, I I'm would have just grabbed it immediately. Also, it could also mean very important thing. सोने से पहले avoid watching ghost stories because it does tend to play in your mind. Because now तुम्हारा imagine. व्यूअरशिप भी कम हो जाएगा. मैं बोल रहा हूँ 9:30 तुम ये शो लगाते हो और फिर रात के 11 बजे तक चलता है, सब देखते हैं. Yeah, I कोई know. सोता नहीं आजकल नहीं, सुरेश. नहीं, This is मैं from अपने खुद the के बारे में बात कर रहा हूँ. वो olden days में लोग सोते थे, अभी नहीं सोते लोग. मैं ओल्डन डेज का आदमी, तो मुझे तो नींद आती है तो. Anyway, thank you for joining us. Correct. Have a good one. Thank you so much, Bye Jose. bye. Thank you so much. Bye bye. थैंक यू, Have a थैंक यू, good बाय one. बाय. मैं ओल्डन डेज अरे बटन नहीं, दबा. एक्चुअली मैं गोल्डन डेज का आदमी. Maybe, sir, we were Golden, talking golden. about Reader's Digest. We've given away our ages. I'm gonna be 65 very soon. I'm waiting for अरे Suresh's reaction. I didn't want to comment on that also, because I just saw very interesting that the sweepstake, somebody wrote also, sweepstakes जो था Reader's Digest used to be Another the drink biggest for scam. Suresh. Yeah. But I love like someone he said also, Rahul, that the Good content was content. top notch though. It Terrific really was. content. Really Terrific was. content. All right. Before we move along, just want to say thank you. Aditya M. Suresh ji is the lead hero of all Hoezaay streams. Just saying, थोड़ा सा super chat उनको भी देना please. हाँ, सुपर चैट देके फायदा कैसा, वो जी क्या जाता है, मेरे को आएगा तो ठीक है. और मैं फिर तो से ये ये सब दोहराना बोलता है चाहूंगा. स्ट्रीम पे, फिर मेरे को गाली मिलता है. You know that, सुरेश? हाँ, सुरेश सच बताओ. कौन दे सकता है तुझे गाली? सच बताओ लोगों को. मैं पैसे के लिए थोड़ी कर रहा हूँ ये सब. आराम से तू रख अपने पास. सच बता. मैं दोस्ती के लिए कर रहा हूँ. तू मुझे मत देना, तू मुझे सुरेश, पैसे मत देना. सुरेश प्लीज, नहीं तो I don't want to tell them the truth. You tell them the truth कि मैं वो I don't want it. मैं कुछ नहीं साला कर रहा. हरामखोर तू बताएगा ही नहीं ना. सुरेश को मैं हर स्ट्रीम के बाद लाइक एन अकाउंटेंट आई सेंड हिम द ठीक है. डिटेल्स कि ये कितना सच है, सुपर सच चैट है. कितना है, कन्वर्जन रेट, आज का कन्वर्जन रेट. Correct. You have in dollars. So seriously, of nearly 1 crore he owes me, उससे मैंने बोला ठीक है 50 दे दे, बाकी तू रख ले.
Suresh has paid for my lunch for over a decade though when we used to work in radio. तो उसका वो that's How 1,000. embarrassing. I think together I've eaten 6,000 jumbo vada pavs because of Suresh के दम पे. That means I must have had 12,000. Bro, how much vada pav we used to Oh eat? Man? God, seriously, man. You know, That's so it got good. to a point where I told you this also, na? It got to a point where I screwed up my insides. I had so much vada pav. He said, you gotta stop eating vada pav, bro. Yeah. I love vada pav. Screw them. Screw the doctor. I'll still eat I it. swear, Okay. man. Mouth is watering now. Yeah. I've actually got some vada street later. Oh, best बाद में खाएगा मैं. तो खा ले बाद में. Did we just take Kerala ghost story in? We did, na? Yes, we did. Sorry. We did. मैं अभी उठा. Uh, Okay, here we go. Next person coming in hot. Ding, 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 ding. Nepal possession story. देख किसी ने ब्रेड पकोड़ा डाल दिया है. This is too much. अभी Did you मुझे say बहुत भूख लगी है. pakoda? Oh. Hi Suresh ji, how are you? Hi madam, आपको किसने पकोड़ा? आप कितना मेरा हाथ को पकोड़ा. आप हड़बड़ा नहीं हो. आप हड़बड़ा जाती हो जब भी मैं आती हूँ. When I बिल्कुल come, you're बिल्कुल. like, I don't make those sounds, madam. hey madam. आपने जो आवाज निकाला वो गलत आवाज 10 था. साल की दोस्ती और आज भी आप मैडम कहते हो. कितना रिस्पेक्टफुल हो आप सुरेश जी. आई लव दैट. Thank you. Mohammed ji, thank you so much for your message. Motion Gyan says, what did I just watch? Am I in the weird part of YouTube again? You sure are. Just kidding. तुम लोग bros है मेरा bros. Thank you Motion Gyan. Aditya M, I already read Aditya ka message. Amay says, अरे before we get to Amay's message, JJ, परिणीति मैं तेरा प्यार में पागल हो गया. मुझे तुम्हारी अदाओं में अदाओं में खो गया हूँ. थोड़ा आपका मेरा ग्रामर ऑलरेडी इतना गंदा है और आप ऐसे लिख रहे हो. ठीक है. क्या अदा के चल तेरे पर. हेलो हाय. एक मिनट. एक और मैसेज है. Amay says, yeah, I'm so happy that Karmas is coming back. Will be season 6 since previous season 6, 7 and 8 were work from home editions. Yeah, we negated the work from home editions. It's like, कुछ भी था. तो we kept that. So that's not a season. कान मस्ती और वो अलग था. कान मस्ती की दम पे वो चल रहा था. Som that says, for Hoezaay and Suresh sir, so that you guys can keep on making it bigger. Oh. Maybe आपके लिए था सुरेश ये. Yeah, probably. All right. Very curious, huh? Call has waited long enough. अभी और बहुत लोगों का नाम लेना बाकी है. शोकरा जी थोड़ी देर के बाद आके वापस लेगी. मीनवाइल लास्ट मैंने जो देखा ज़ैंथोपोलिस. थैंक यू. सिंगापुर से डॉलर्स भेजे हैं. आप ही रात में. सॉरी. हेलो. हाय ब्रदर. एक मिनट. तुम्हारा क्या साइड बिजनेस चल रहा है सुरेश? वेयर आर यू एक्सेप्टिंग सुपर चैट फ्रॉम? इधर तो नहीं है. मैं देख रहा हूँ तेरे इधर ही है. तेरे They're चैनल just sending you messages saying कि super chat is sending you text messages. No, they are not sending text messages. अबे तेरे live chat. छोड़ो. Anyway, Xanthopolis. Now you heard me announce a name and you see what Hoezaay did that because he doesn't like me talking at all. I don't know what is happening. Yeah. Sir, आपका स्वागत. I know you're just as confused as we are. Welcome to the stream. Well, thank you, Hoezaay. तो Wow, क्या it is so surprising and shocking. काफी weird है ना वो. अजीब फील होता है. Shocking. Right. Actually, मैं आपका शो कोविड के टाइम से देख रहा हूँ and I want to give shout out to Sanket Bhai from Mumbai who helped me to watch this stream. And मारो संकेत को मारो. This is his fault. Yeah. All right. I love you guys. Thank you. Hoezaay, Suresh, Cyrus, and Cyril. Wow. Thank you, man. Great. Put that name Okay, so this story is I would rate. मैं हिंदी में भी बोल देता है. Please. हाँ, बिल्कुल. Story I would say it's 8 out of 10, but you can rate like कैसे आप rate करोगे. So this happened in Nepal. So one of my friend when she was in I guess 8th or 9th grade में जब थी उसका एक छोटी बहन थी who was on 1st or 2nd grade. So one day क्या हुआ कि this छोटी सी बच्ची वो first bench पे. अब नेपाल में क्या है कि benches they are like long benches, they're not like individual benches, right? So
राइट। तो तो वो फर्स्ट बेंच में ऐसे बैठी हुई थी एंड अचानक से वो खड़ी हो गई एंड शी जस्ट फ्लंग दैट डेस्क टू द टीचर, वो भी ब्लैक बोर्ड में। She एंड flipped शी the जस्ट table. वाह। यस, शी जस्ट थ्रू, वो भी फर्स्ट सेकंड ग्रेड की बच्ची, शी जस्ट फ्लंग दैट डेस्क टुवर्ड्स द What? टीचर and that teacher nearly missed and she just stood up and उसके पास बाल ऐसे सामने आ रहे हैं and she's just like making growling noises, ठीक है। तो the teachers called my friend, so वो आके उसको पकड़ के she's crying, वो रो रही है कि क्या हुआ ये बताओ ऐसे ऐसे करके, and somehow they took her to her house। तो क्या हुआ कि after that then she started having these possessions, ये छोटी सी बच्ची, and every time she used to get possessed, her hair would, fall down, and uska face used to look like an old woman, and she would just start growling and stuff. And ये बहुत लंबे time तक हुआ। They went to churches, they went to temples, जहाँ से भी help मिल सकता है, they went to all those places, right? And like this continued for quite some time. And every time a possession होती है, तो she would just pull out her hair and do all kind of weird stuff. So like after 4 or 5 years, somehow ये खत्म हो गया, and then she started becoming a little normal. And my friend, उसको पूछना था कि क्या हुआ हुआ क्या उसको, तो she went and asked her sister कि how was it like, or what it had actually been. So उसकी छोटी सी जो बहन है वो बोली कि actually before that started उसको एक सपना आया कि उसके सपने में she woke up and she saw it was a dark room, एंड ऐसा था कि उसके सामने देयर वर डॉल्स, तो कुछ डॉल्स थे एंड दोस डॉल्स रिजेंबल्ड एग्जैक्टली लाइक हर फैमिली मेंबर्स। तो व्हाट शी डिड, और वो उसको बैकग्राउंड में कोई एक बुढ़ी सी औरत का आवाज भी आ रहा था, तो शी गॉट रियली स्केयर्ड एंड सो शी पैनिक, एंड उसने क्या किया कि उसने वो जितने भी डॉल्स थे उसको छुपाना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो शी हिड ऑल द डॉल्स ऑफ हर फैमिली मेंबर्स। तो उसका मतलब 5-6 मेंबर्स थे, तो उसने 4 या 5 ऐसे डॉल्स उसने छुपा दिए, एंड फाइनली व्हेन शी रिटर्न टू पिक हर डॉल, दैट वुमन केम एंड हेल्ड हर हैंड, उसको पकड़ लिया। सो आफ्टर दैट शी स्टार्टेड हैविंग दीज पोजेशंस, एंड and so 4 or 5 years after it became normal and she's completely fine now। so ऐसा है story। Damn it. तो अगर Okay, not सपने में bad। ऐसा हो गया, लास्ट वाला डॉल नहीं लेने का। no ले, well पहले अपना it's डॉल उठा something। लेने का, फिर हम लोग बच जाएंगे। हाँ नहीं, हाँ, मेरा एक she should have done that। सो आई सीरियसली, मेरा थियरी था कि ऐसा लोग पोजेस्ड होते हैं ना, उनको ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, स्ट्रेट है उनको ऐसा वेट लिफ्टिंग कंपटीशन ओलंपिक्स में भेज देगा, तो ऐसा वेट उठा के टाक टाक, तो इमेजिन गोल्ड मेडल। Oh God. न्यू वे ऑफ ट्रेनिंग मैन, जस्ट इमेजिन This इन is बॉक्सिंग wild. एंड ऑल दिस स्टफ, सीरियसली, देयर इज वी, आर यू पोजेस्ड? Yes, I am. You can be a boxer right now. Come on. No, and also क्या है कि नेपाल में they still believe in all those witchcraft and all of that। Everywhere, So everywhere there. yeah, That's true about even the Western countries. वो लोग क्या छुपाते हैं ये सब चीजें, लेकिन वहां पे भी बहुत ज्यादा बिलीफ है विचक्राफ्ट में। और हम लोग क्या अपना साउथ ईस्टर्न कंट्रीज यार, एशिया में हम लोग बिंदास है, अपना जो है Like वो है। like they वहां say, पे Michael has said in the office, na, some people are superstitious. He's just stitious. yeah। ओ क्या मारो इसको। Michael के बारे में ऐसे नहीं बोलेगा. But sir, thank you so much. Great story, great narration. Very freaky. Thank you। I can imagine the kid at the Olympics, like Suresh is saying, and they're like, "Why is the contestant growling?" Nah, she's into heavy Thank metal. you। All right, take care, buddy. क्या Have a good Thank you, one. Jose। I Bye, would bro. I would just finally like to shout out to Saket bhai for helping with this, I mean stream देखने के लिए, and हीरा लोग, thank you, keep this stream going। संकेत जी के लिए तालियां. थैंक यू, आप भी हीरा है। Bye. थैंक यू। क्या बात है. Some people were saying कि थोड़ा बहुत Tiger Shroff का vibes. He could play Tiger Shroff's brother in a film. I think it was Tiger Shroff's birthday also a couple of days back. Why do I know that? Happy birthday, Was Tiger it? Shroff. Anyway. और टैगर हैप्पी बर्थडे bro. Mama Ji, thank you so much. He says, I love Ice Barfi Paranit. Please say hi, Pragya. Okay. Hi, Pragya. Be my body. Hi, पागल हो गया। Suresh. Good to have you here. Hi, hey, how are you, man? Sorry.
just beach me. How are you, man? All right, if you just tuned in and you're wondering, man, is this the weird part of YouTube that we end up at post 10 in the night? You're right. Please come, hit the link in the description. Come tell us your ghost stories. बहुत कुछ करने के लिए है. Shall we, before we take on our next story, Suresh ji, we're going to move on to stories being read to you by what अपना नाम क्या था? Short term memory. मैं भी भूल गया. On the spot memory test. क्या नाम दिया आप लोगों को? Zambi जी. नहीं यार, मेरे Instagram पे काफी scrolling करते हैं. Alright, here we go. Next story, the Phantom Patient. Yes, it is Mumbai streets, Nathan. Thank you for asking. Please continue, sir. Thank you. The ambulance company that I used to work for had a haunted ambulance. Rig 12. Recounts Reddit user Zerbo. A lot of EMTs had stories about it, but I never put much stock in paranormal stuff. That is until I had my own experience with Rig 12. My partner and I were working in a rural community at 3 a.m. and it was pitch dark and completely quiet. We were both dozing. I was in the driver's seat and she was in the passenger seat. I woke up to a muffled voice. But I thought my partner was talking. I told her I was trying to sleep and closed my eyes. I distinctly heard a male voice say, "Oh my God, am I dying?" Oh shit. Followed by a few seconds of heavy breathing. My partner and I sat up straight and looked back into the patient compartment where it sounded like the voice had come from. Oh my God, I'm getting goosebumps. Things were quiet for a couple of seconds, then we heard the click of an oxygen bottle regulator and a hiss as if it was leaking. I turned on the lights and we ran out of the rig. I thought a transient might have climbed in while we were asleep, so we opened the rear doors. No one was there. I checked the oxygen bottles. Neither was opened. We didn't sleep much that night. Oh my God. That could really be a crazy thing, Suresh. Imagine working as an ambulance driver and then hearing भाई सब आगे से लेफ्ट मार देना. नहीं आप मरे नहीं एक्चुअली मेरे को इधर जाना था, ऑटो रिक्शा और उबर नहीं मिल रहा था. मैं एक्टिंग कर रहा था, मरने का एक्टिंग. उबर नहीं मिला इसलिए. So ridiculous. All right, taking our next caller. मेरा मन में चल रहा है कि नहीं? चल रहा है भाई. Superb. Oh, somebody has put up information. Cyril is playing Counter Strike. He's always playing Counter Strike. ये नया क्या है इसमें? And if I'm correct me if I'm wrong, he doesn't have any reason not to be here today. Anyway, no, he's busy. There's something has happened. You can always cover up for him. No, something happened with Cyril. But the doctor said with a little bit of a few stitches, they can attach it back. His earlobe, something happened there. Stop losing it. Ansika hostel ji आइए. Oh. Ansika ji. ये कीरा. Touch your nose, touch your shoulders. मैं नाचू क्या इधर? करता हूँ 2 मिनट में. Music, rotate your chair. अंशिका जी, आपको पहला कैमरा ऑन करना पड़ेगा वो आधार वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद आपका ऑडियो ऑन हो सकता है. तब तक के लिए यशोधन हजारे, Hoezaay Suresh sir, request you to give a shout out to my friends Neha and Onkar Bhede, Chaitanya Hazare, they are fellow Ghost Stories fans. Neha, Onkar, Pende, Chaitanya Hazare, कैसे है तुम लोग? अरे अंशिका हम लोग का साथ दे रही है. क्या बात है. All right, here we go. What a cool background. What is that? Anime. Which one? Wow, it's a lot of lovely anime. A lot of animes. Like, Wow, sick. Okay. yeah. Tell us your favorite anime. For current or like overall? कुछ भी हम मतलब हमारे viewers के लिए उनको देखने का है तो. Overall. Currently, it's My Hero Academia. Oh. Fist bump. Midoriya. Yeah. Bruce Ultra.
Sorry. So, I will think I'm insane. Yes. हाय चलो, होजो, हाय सुरेश सर। हाय हाय। मैंने लास्ट पता है अब लास्ट अप्रैल में भी मैंने ज्वाइन किया था। हाँ हाँ। नाइस। उस टाइम में आपका नहीं वॉल नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ उस टाइम में ऐसा और नहीं था। पुरुष ऊर्ध्वा। Okay, sorry, बस बहुत हो गया। Okay, चलो। अंशिका, you have a hostel story to tell. लास्ट टाइम भी आपने मेरा नाम गलत ही लिया था और अब फिर से अंशिका। अंशिका। या वो आप अंशिका बोल रहे थे अभी। I'm करेक्ट। so sorry, माफ कीजिएगा। अंशिका, इट्स फाइन। शिका, मैं सीख रहा हूँ। अंशिका। हाँ, अच्छा अभी मैं कैमरा बंद कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल आप कर श्योर। सकती हैं। थैंक आपका यू। वेरिफिकेशन हो गया। टू 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 आदर सर। सो मतलब मेरे पास काफ़ी हॉरर इंसिडेंट्स है, लेकिन अभी मैं आपको अपना हॉस्टल वाला बताती हूँ। वो मतलब सबसे हॉरिफिक लगता है मेरे को। प्लीज। थोड़ा सा माइट भी हो सकता है 8 से 10 मिनट, मतलब 7 से 8 मिनट तक जाएगा इसमें। गो फॉर इट। ओके। तो अब हम लोग थोड़ा टाइम दे सकते हैं आप सोचने के लिए। थोड़ा अगर आप कम कर सकते हो कर दीजिए, बट स्टोरी के ऊपर डिपेंड कर दीजिए। मतलब ऐसे ना 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं मिला के, तो थोड़ा सा ऐसा। ओके ओके। तो मतलब फर्स्ट ईयर में मेरे कॉलेज के ऐसा सीन हुआ था कि हाँ, मेरे को थोड़ा वो होता है ना, रात में घूमने वाला आदत होता है, रात में नींद नहीं आती है, तो मैं रात रात भर घूमती रहती थी अपने दोस्त के साथ में। तो वन डे वी वर जस्ट सिटिंग इन अवर मैस, और वो बंदी पूरा अपसेट हो रखी थी, तो मैंने उससे बोला कि भाई क्या हुआ तेरे को? तो शी वाज लाइक कि यार अब से मैं बाहर नहीं घूमूंगी तेरे साथ। मैंने कहा मेरे को बता तो क्या हुआ है। वो कहती है कि मेरे रूम से अजीब कुछ ऐसा स्मेल आ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है अपन देखते हैं क्या सीन है उधर पे। तो उसका रूम में ऐसा था कि कोई भी उधर पे रूममेट्स नहीं थी, वो दोनों जा चुकी थी। तो शी वॉज लिविंग अलोन। तो मैं उधर पे गई, तो हमने पूरा रूम ऐसा मतलब एक्सप्लोर किया कि स्मेल आ किधर से रहा है। तो पूरा रूम देखा, अलमीरा वगैरह इधर उधर किया, कहीं से कुछ भी ऐसा मतलब कोई चूहा वगैरह ऐसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट फिर उसका जो पिलो होता है ना, पिलो के जस्ट एक साइड से ऐसा स्मेल आ रहा था, वो पंजेंट टाइप स्मेल था। आप एक हंसा साइड रहे से। हो। हाँ मतलब एक पूरे पिलो से भी नहीं आ रहा, जस्ट वन साइड फ्रॉम द पिलो। तो उधर से वो स्मेल आ रहा था। फिर मैंने अपना बेड वगैरह उसी के पास में लगाया, पूरी रात मेरे को उधर पे नींद नहीं आई थी। मेरे को ऐसा लगा जैसे फैन पे कोई बैठ के ना मेरे को जस्ट देख रहा है। मतलब इतना गंदा एक्सपीरियंस था उधर पे। ठीक है, फिर सेम खत्म हुआ, नेक्स्ट सेम में हम आए, तो हमारा हॉस्टल चेंज हो चुका था। तो अभी हम हॉस्टल नंबर 6 में थे। और हमारे कॉलेज का क्या सीन है कि जैसे हॉस्टल नंबर 5 और हॉस्टल नंबर 6 में काफ़ी सारा ऐसे इंसिडेंट्स हुआ है। तो पहले भी काफ़ी सारी स्टोरी सुनी थी। तो उधर पे ऐसा बोलते थे कि मतलब पहले कोई लड़की थी 5th फ्लोर से, उसने जंप कर लिया था, उसने सुसाइड किया था। आफ्टर दैट उस रूम में 4 लड़कियां रहने आई, फिर उन्होंने चारों ने साथ में उधर से मतलब सुसाइड किया था कूद के 5th फ्लोर से। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज थी, ठीक है। हम्म। हाँ ठीक है। फिर। तो फिर एक दिन थर्सडे का दिन था, तो हम मैस से आए। तो मेरी दोस्त ने नया फ़ोन लिया था, तो हम लोगों ने सोचा व्लॉग बनाते हैं और 5th फ्लोर पे चलते हैं। अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया था उसको, हॉस्टल को। तो हम लोग गए। तो उधर से जो स्टेयर केस का रास्ता था हॉस्टल में, वो पूरा ऐसा अंधेरा टाइप होता है ना, उधर पे एक भी लाइट नहीं थी। तो थोड़ा बहुत डर लग रहा था। 5th फ्लोर पे हम लोग पहुंचे। तो 5th फ्लोर से ऊपर था टेरेस। हमने उधर पे मतलब ऐसा जाके टेरेस पे, और जो स्टेयर केस होता है ना उसके बीच में एक पैसेज होता है। तो हम लोग वहां पे खड़े थे, और जो टेरेस का गेट था वो हमारे साइड से लॉक था पूरा, मतलब उस पर लॉक लगा हुआ था। और हम लोग फिर वहीं पे ऐसा खड़े होके कुछ कुछ बोल रहे कर रहे। फिर हमने रियलाइज किया कि साइड में मतलब जो 5th फ्लोर पे था उधर पे एक बंदी खड़ी हुई है, और शी वॉज स्टेयरिंग एट अस, मतलब कंटिन्यूसली घूरे जा रही है वो। तो पहले तो हमने इग्नोर किया। फिर मेरी दोस्त बोली कि यार ऐसे है ना, कोई ये देख क्यों रही है इतना देर से। तो फिर मैंने उसकी तरफ देख के, ऐसा होता है ना, ऐसा मिडिल फिंगर दिखा के कि भाई क्या हो गया, क्यों देख रही है, ऐसा वाला। और वो ऐसा हैंड जेस्चर से बोल रही थी, ऐसे नीचे आने वाला, मतलब घूर रही है और हैंड जेस्चर से ऐसे नीचे आने को बोल रही है। उसका मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन था, ऐसे पूरा कर्ली हेयर्स थे उसके। तो हमने तभी उसको इग्नोर किया। तो जैसे हम उधर से हटे, अचानक से जो टेरेस का गेट था उधर से नॉक होता है। तो हमारे साइड से लॉक था, अब टेरेस के साइड से एकदम नॉक हुआ, तो हम लोगों की फट गई, हम सीधा नीचे आए। हमने शिट। मतलब कुछ नहीं देखा इधर उधर, हम सीधा नीचे पहुंचे। किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला, रूम में गए अपने अपने, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर अपनी क्लासेस करके आए फ्राइडे को शाम में, मैं, मेरी रूममेट,
बैठे हुए हैं, हम 3 जने थे। तो होता क्या है, हम तीनों को एक स्मेल आ रही है, लेकिन हम बोल नहीं रहे। फिर रात में मेरी दोस्त बोलती है, यार देखो कोई स्मेल आ रही है क्या? मैंने कहा आ तो रही है यार। फिर हमने अपनी दूसरी रूममेट से पूछा, शी वाज आल्सो लाइक हाँ यार बहुत देर से आ रही है। तो फिर हमने पूरा रूम चेक किया, मेरे एक कार्टन रखा हुआ था उसमें शूज थे काफी सारे, तो हमने सोचा माइट भी उधर से स्मेल आ रहा हो। उधर जाके देखा, उधर से भी कोई स्मेल नहीं है। रूम के बाहर देखा, वहां से भी नहीं। फिर से मेरी दोस्त की डेस्क पे से स्मेल आ रही है पर्टिकुलरली, और वही पंजेंट सी स्मेल होती है ना, वो जो बहुत इरिटेटिंग होती है। और मतलब, तो फिर हम दोनों को क्लिक हुआ कि यही स्मेल हमें लास्ट टाइम भी हॉस्टल से आई थी। तो फिर रात में हम डरते डरते सोए ऐसा। नेक्स्ट मॉर्निंग उठे, पूजा किया थोड़ा रूम में, थोड़ा ठीक हुआ, चिल हुआ। रात तक सही था सब। फिर रात में मैं सो गई, मतलब मेरी रूममेट्स वगैरह सब सोई हुई हैं। मेरा आदत है वही 4 बजे सोने का, यूट्यूब पे मैं कुछ कुछ देखती रहती हूँ इतना। मैं मेरा ऐसा बेड है मान लो, और उसके बगल में मेरी टेबल रखी हुई थी बराबर में। ठीक है। और मैं लेट के राइट हैंड में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ, और मैं वीडियोस देख रही हूँ। और पूरा अंधेरा है कमरे कमरे में। मेरी दोनों रूममेट सो रखी है। मेरे को लगा मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, मतलब टेबल के सामने कोई खड़ा हुआ है ऐसा। तो होता है ना कि आप ऐसे फोन देखो तो लाइट में थोड़ा अडेप्ट करने में टाइम लगता है आइज को। तो मैंने उसको रखा फोन को, एंड एक ऐसा अराउंड 6 फीट अराउंड एक ब्लैक सिलुएट खड़ा हुआ है ऐसा, कर्ली हेयर से उसके भी। मुझे लगा मेरी रूममेट होगी, उसकी भी हाइट अप्रोक्स यही थी, 5'9" 5'10" के अप्रोक्स। 10 तो मैंने इग्नोर मार के मैंने फिर से कंटिन्यू किया फोन देखना। और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़े होते ना, ऐसे खड़े होके मेरे को देख रही थी। मैं फिर देखने लगी, फिर मेरे को रियलाइज हो कि यार देखो तो मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं उठी, देखा वो नहीं है। मैंने सोचा मे बी वॉशरूम में गई हूँ। मैंने वॉशरूम का गेट खोला, वॉशरूम में कोई नहीं था, और लाइट वगैरह सब बंद है वॉशरूम की। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो बेड पे ऐसे घोड़े बेच के सोते हैं ना, तो फिर मेरी जो रूममेट है वो घोड़े बेच के सोई हुई है। वो फिर मेरे को याद है वो मेडिकेशंस पे थी, मतलब उसकी दवाइयाँ चल रही थी जिससे उसको नींद आती थी गंदी वाली। तो मतलब वो तो नहीं हो सकती है। फिर वहां पे मेरे को ऐसा एकदम डर लगा, मैंने सीधी उधर से जंप मारी अपने बेड पे। फिर मैं अपने दोस्त को उठा रही हूँ, मेरी आवाज नहीं निकल रही, मतलब पूरा ऐसा हो गया कि फट गई मेरी अच्छे से। उसके बाद मतलब फिर नेक्स्ट डे जब उठे तो हम लोगों ने फिर वो चीज़ देखी सारी, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरे जो बाबा जी हैं, वो ये थोड़ा तांत्रिक वाला काम ये सब करते हैं। तो मैंने फ़ोन वगैरह किया घर पे, तो उन्होंने बताया कि हाँ कोई है मेरे पीछे ऐसा करके। फिर बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि ऊपर जब भी वो 5th फ्लोर पे वो लड़की नहीं थी, वो जो ऐसे नीचे आओ आओ ऐसा हाथ से जेस्चर कर रही थी, वही सेम सिलुएट मेरे को रूम में दिखी थी। तो मतलब ये सब हुआ था उधर पे ऐसा। अरे बाप रे। काफी उधर पे ऐसा होता रहता था, मतलब बराबर में कोई सुसाइड कर लेता था, पता भी नहीं चलता था। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रखे थे उस हॉस्टल में। इसके बाद भी कुछ कुछ इंसिडेंट्स थे, लेकिन वो मैं शायद नहीं बता पाऊंगी अभी। बट आई थिंक इससे हम सीख सकते हैं कि दूसरे बिल्डिंग के लोगों को कभी मिडिल फिंगर नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो लोग आ जाते घर पे। अरे वो ऐसा ना एकदम घूर के देख रही थी, मतलब फिर क्या ही बोले अभी। तो उसके बाद खैर डर तो लगा था। ठीक बट है। किसी ने कहा था अपना चैट में, अपना हरामी चैट को आप तो जानते ही हैं, तो किसी ने कहा वी कुड हैव सॉल्व दिस विद आधा पादा किसने पादा। आधा वो पादा स्मेल, किसने पादा आम दाम दुस और पाद लिस्तुस, अरे जिसने होते भी तूने पादा पादा। उनके सिर के ऊपर मकड़ी नहीं, का जाल है। मैंने कुछ ज्यादा जल्दी बोल दिया, मजा नहीं आया अब नो नो, स्टोरी। नहीं नहीं ये बहुत हल्लू। मजा आया, डोंट वरी, नेवर डाउट योरसेल्फ। ये स्ट्रीम पे आप खुद को डाउट कर रहे हैं, आप पागल हो गए। नहीं, बट यूजुअली क्या बट होता है ना, मेरे सारे दोस्त डर जाते हैं जब मैं स्टोरी बताती हूँ। तो वो क्या तो स्मेल क्या था एग्जैक्टली exactly? अक्षा पूछ रहे हैं तो वो। नहीं, स्मेल वही होता है ना, जैसे कोई नेगेटिव एंटिटी आपके आसपास होती है तो वो गंदी सी स्मेल नहीं आती, वो पंजेंट टाइप स्मेल होती है। ओह, वो इरिटेटिंग सी स्मेल होती है। अब मैं कैसे बताऊँ। वो तो मुझे एक बस। बात बताइए, आपने यहाँ तक हम्म। तो समझ गया क्या क्या हुआ है सब पता है, लेकिन आप लोग उसी रूम हॉस्टल में कंटिन्यूसली रहा उसके बाद, या हाँ आपने हाँ। छोड़ दिया और कहीं चले गए? उसके बाद जब मैंने दादाजी को बताया ना, तो उन्होंने ऐसे मतलब मेरे को एक धागा दिया। पहले तो मैंने उसको धागे को बांधा, और फिर उन्होंने बोला था कि गेट पे कील ठोक के उस पे वो धागा बांधना है। 2 धागे उन्होंने दिए थे, एक मेरे लिए और एक रूम के लिए। तो फिर उसके बाद ऐसे रूम में तो पर्टिकुलरली इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, और ना ही मेरे साथ। मैं वो धागा अभी तक बांध के रखती हूँ।
तो ग्रेट स्टोरी, होता और है। आपने बहुत अच्छे Yeah. से भी बताया. Some people are asking you, did it smell like eggs? नहीं नहीं, This is मतलब वो such a तभी भी weird मैं पूछती stream. हूँ। नहीं, अंडा का स्मेल नहीं था ना. ओके, ठीक है. अंशिका, थैंक यू सो मच. Normally they say the smell of dead bodies, that's Yeah. rotten body, rotting bodies or some flesh. That's why they say अरे कोई मरा हुआ चूहा होगा. Lovely. That's the thing. Lovely. ऐसा मतलब वैसे ही कुछ स्मेल होता है, मतलब उस दिन के बाद Right. मेरे को लग गया कि यार फालतू के पंगे नहीं लेने चाहिए इन लोगों से। बिल्कुल रिक्स, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं बिल्कुल. लेने का. मैम, हाई फाइव. हम लोग साथ में, both of us watch Midoriya, Prusurtra, or Maito, and we have the same feelings also. So thank you so much. Have a good one. चले गए आप? ओके, चलो. चले गए उन्हें क्लासेस के पास. She was wondering what's wrong with you. चलो, ठीक है. Bye. Bye bye. Interesting story. But Suresh, you know what's coming to mind first? You know what's coming to mind first? Yeah. Socks. Gas leak causing some kind of maybe hallucinations. No. Yeah. But in the hostels, in individual rooms, they won't allow gas Okay. to be there. Fair enough. Fair enough. I want that. मैं जीत गया. They should have done that. Harami chat is in its truest element, right? क्या तुम लोग ना. Not encourage all this. But मैं हंसूंगा थोड़ा बहुत इधर उधर, but I will not encourage it. Not at all. Next caller, Suresh. Shall we go on to our next caller? Please, Pipes please, also please. smell sometimes. Mega's ex-plumber. Also, sometimes if there's a bathroom, of course, from the drain pipes, those dirty smells, pungent smells can come. गंदी वाली. But then, gandhi wali. But then specifically, she said, "Oh, desk के उधर से आ रहा था." And once from the pillow. So I discount that Neighbor also. ने तो गंदी वाली किया ऊपर से, तो वो नीचे घर में आया. Gaslit. All right. Suresh ji. You thought Pariniti was coming. Let's go. Shivesh बोल रहा है कि petition to have Pari on always. Hoezaay, when super chats come, keep rocking, guys. See, yes, ये अच्छा idea है, but then story के बीच में अगर मैं आ गई तो थोड़ा वो माहौल में किचन बिगड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. ऑलरेडी हमारे पास सुरेश तो है ही, तो दो लोग. मैडम, 10 साल की दोस्ती. एनीवे, संकेत जिनको हमने शाउट आउट दिया था, मारो मत होजे भाई. थैंक्स फॉर द शाउट आउट. अमन, नेपाल पोजेशन स्टोरी. लव यू सुरेश सर एंड होजे भाई. लाल दिल. इंस्टेड ऑफ इमोजी उसने बोला लाल दिल. 2 बार मैंने पिक्चर लिया उसका. या उतना ही आपके लिए, तो प्लीज लीव माय बॉडी. Hey, hi Suresh. How's it going? Kira said fantastic theory. She said some boy fell in love with her and वो stalk कर रहा होगा and लड़के लोग नहाते नहीं है. What? कुछ भी. But a nice theory. Imagining कि क्या है. Oh my God, Suresh. SJ is back. हाँ. पिछली स्ट्रीम की वजह से मेरे को बहुत मारा मेरी बीवी ने. But SJ is back saying hi Hoezaay baby. Did you miss me? I know SJ. सुनील जोशी. मैं आगे बढ़ो. सुनील जी, ठीक है. But no problem. I'm open to all kinds of love. You know what I mean? Especially क्योंकि ये तो ये लोग तो पैसे भी दे रहे पास साथ में, प्यार के साथ साथ. अरे मजा आ रहा है. All right, so let's keep going. Next caller coming in. Suresh, which catering? Who's catered tonight's dinner for you? This I'm having popcorn, man. Popcorn man from Bandra. What? Yeah, man. Suresh, I'm giving you honorary Bandra residency, man, because Thank you, man. you without any of the influences, man. You're a Bandra bagoni, man. Father-in-law Aulas, man. Yeah, I studied in MMK, man, brother. MMK little that side, man, on the main road. I know, man. All right. Aditi G, Aditi A, Aditi B, Aditi C, Aditi G, please आ जाइए, अपना कैमरा ऑन कर दो, फिर आपका हम देखेंगे. Palgar. Can you Palgar? But Dhaval, hi Dhaval. Menon G, can you
Can you palgar but in Bidu style? What does that mean, Suresh ji? I don't know, bro. Palgar बोल दिया मैं. Bidu style. Acha, you just want to hear it in that accent. Very nice. Nitin अरे Singh Gautam, Zehरीli paade neendi ud jati hai. I wish I had not read that out loudly, but you really added something. You added the परी sugandh to life. अदिति जी आई और चली गई. पता है आपको देख के पता है. डर गई. Aditi हाँ. ji, She wants to say she something. wants to Has say to raise her something. hand. हाँ, बताइए अदिति जी, आपका वेरिफिकेशन हो गया भाई वैसे तो. Hi, oh my God, am I audible? Very much Spotify, Amazon Music, sub, book my show और I am so happy. Oh God, actually मुझे बस hi बोलना था. I was very homesick and I listened to your, ghost stories to feel अरे थोड़ा homely क्योंकि बहुत ही vibes अच्छी आती क्यों है आपके मुझे. घर I में don't know ऐसा why. बकवास बातें होते हैं क्या? बहुत बहुत. इधर आओ. Where दूर are you? भाग You Where दूर are guys you? भाग. are amazing. I'm Where in are you? Houston अभी. अरे ह्यूस्टन में मेरे बहुत छोकरे लोग हैं. Oh yeah. Oh wow. I'm so happy to see you both. Thank you. My कितना brother-in-law actually stays there in Houston. Oh, okay. But Still we thank have you a so problem. much. This is really nice. Take Sorry care. to waste your No, time, no, but this मुझे is बहुत अच्छा लगता है. Suresh gives me 50 rupees every time somebody calls and says nice things about us. I've made lots of Yeah, money. please keep doing this. और मुझे वो love stories वाले का लिंक नहीं मिल रहा था. I don't know how to join that. आप वो आ जाएगा वो, it'll come, don't worry. अभी कुछ नहीं हो रहा है, Yes, जब रिकॉर्डिंग हो रहा है तब आएगा. The interesting conversation because हम लोग record अगर शाम में कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, Aditi won't be able to join because of the time difference. Oh, ठीक है, तो but मैं मैं अभी आ जाऊंगी तो भी. मैं हर देश ठीक का है. टाइम डिफरेंस अकाउंट में लूंगा. सुरेश नहीं जी, नहीं थैंक यू. नहीं. परी जी आपने सुना अदिति जी ने कहा कि वो Done, आएगी. done. टाइम डिफरेंस फर्क नहीं पड़ता. Okay, Thank you so Thank much. you, बाय but अदिति, टेक केयर. मैं आ जाऊंगी. Don't worry. मैं कहीं से जुगाड़ करके आ जाऊंगी. क्या But बात thank है. you both of you. थैंक यू. Love you both. हाय Have the हुकुहाय, best night. बाय बुक बाय. क्या बात है, कितना स्वीट. मुझे पता था कुछ लफड़ा होने वाला था. Huh? All right, are you ready, Suresh ji, for the next one? Yes, absolutely. आप अभी भी रहेंगे? Oh my God. Okay. तो I was reading session. Zombie. आइसक्रीम भी मैं लेके आता हूँ. zombie. Next one, are you ready? Yes, sir. Before Reddit.com user Diggsdaws got down to recounting their scariest of ghost stories about living in a place that was obviously teeming with honest to goodness members of the spiritual world, they pointed out the irony of ghost stories that began with the phrase, "Hey, ये तो solid story है भाई, अपना ही type का है. I don't believe in ghosts, but..." After all, no matter how a ghost story begins, it always hinges on the notion that, come on, of course, we believe in ghosts. A few years ago, I moved into a one-bedroom apartment in Melbourne, Australia. They went on to recall, "It was my first time living on my own. The apartment block had been built in the 1930s. I'd been there for a few months when I came home from work one day and went into the bathroom. I saw something strange. A wooden board which had covered a hole in the ceiling that led to a small attic space lay fractured in two pieces on the ground. I examined the pieces. The board was an inch thick and it would have taken Bruce Lee to break it. What great detail. I thought the landlord had sent someone to work on the attic. I was frozen stiff with fear. Someone is up there for sure, I thought. I emailed pictures to the landlord asking if anyone had been there with an undertone of annoyance since she hadn't warned me. The reply read, "Please call me as soon as you are able to." I called and she explained that her last two tenants had said the same thing happened. Oh shit. She promised to replace the board and she did. A month later, I woke up one night around 4 a.m. My body was covered in goosebumps. It felt like someone was rubbing his or her hands on me. Oh shit. Everything was silent, but then I heard a dragging sound coming from above my bed. It was as if someone was pulling a sack of potatoes. I froze, convinced someone was up there. There is no way an animal could make that sound. After 5 minutes, I worked up the courage to turn on the light, armed myself with a cricket bat, and walked to the bathroom. That's when I saw that the new board covering the hole was broken in two. I felt sick.
The dragging sound had stopped, but I heard something else. Whispering. The sound was clear and coming from the attic. It sounded like children's voices, and I could hear one sentence repeated over and over. It's your turn. It's your turn. I switched on every light in the apartment to make things feel normal. It was 5 a.m. and dark outside. I watched TV to try to unwind, and then a fuse blew. My pet budgie, is that a hamster, Dexter, whom I kept in the kitchen, usually never made a sound at night, but he started squawking. That's a bird, I think, like he was being strangled. I never heard him make those sorts of noises. He was screaming. I grabbed my car keys, ran out, sat in the car, and waited there until the sun came up. When I saw people walking their dogs, this comforted me enough to go back in. The front door was open, but I figured I might have forgotten to close it when I ran out. Oh shit. I went to the kitchen to check on Dexter, but he wasn't in his cage. I felt sick again. All my windows were closed, so I looked everywhere inside. When I walked to the bathroom, I heard splashing. What the fuck? Dexter was half drowned in the toilet. I took him out, washed him, and dried him. I was so confused. At 8 a.m., I called the landlord and gave her a watered-down version of the night. Oh, wow, you heard the whispering too, she said. I stayed in that apartment for another 18 months. I heard the whispering on a few occasions, and twice the board covering the hole in the ceiling moved. Although I live elsewhere now, the landlord recently called. She said that her new tenants had begged to speak with me about some of the stuff that's going on there. Forget it. It's their problem now. My soul leaving my body. Suresh getting nervous, drinking water and all. Always drink water, I know. Yeah. So that means, see, सब लोग पढ़ रहे हैं ये stories. Someone said, I heard this story in TISS. अच्छा, you gotta stop Googling scariest stories ever. All right, next caller. Let's see what happens. Story written by ChatGPT. Wait a second. This story, Yes, you read it out from Reddit, right? No, this is from the Reader's Digest article that I actually did a compilation of Reddit stories. So yes, it's all Reddit stories. Oh, so you think Cyril and you have done a deal with Reddit, No, and maybe now you I pay wouldn't me. mind. You have to pay me I more. like Reddit. It's fun. Even I can read it out for them. Suresh ji. Hello, Pari. How are you? Oh, good. Call me Pari, didn't call me madam this time. Rajat Patel says, oh, sorry. Let me just fix that. Rajat Patel says, you missed my previous super chat. Sharwari's dose here sending on after this dose is now earning. Now she introduced me to you guys. Hey, we read it. I remember also reading. Jyoti ji, are you ready? All right. Hey, Pari, leave my body. Hello, sir. Hey guys. कैसा चल रहा है? What's up? सुरेश एक मिनट ले लो आप 2 मिनट भी ले सकते कोई नहीं. seriously I just opened the Zoom link and और you हो let me गया. in. आप रे कैसा ऐसा कैसा हो सकता है? कैसे किसी को बताना मत. किधर से सर? Bangalore. ओके. और And I've been in the stream last year. okay. I told about the driver horror story. Ah yes. On the highway. Yeah. Yeah. So we're ready, sir. We're ready for your story. कितना रेटिंग देंगे आप अपना स्टोरी को? Actually, there is no story. I just came to say hi. अरे हाय, How घर पे कैसा nice. चल रहा है? Hi. What's up, bro? क्या चल रहा है? चलते ये भी चलेगा. चले आपने क्या है? By the way, somebody asked me the score. Gujarat is 37 for 7. Yeah, they're Mumbai playing is very horribly. Yeah, 2000 बोल रहा 208 seems like 2000 right now for them. Yeah, but that's it. मेरा स्ट्रीम हाईजैक हो गया between सुरेश and ज्योति विजय. Take care, sir. Have a good one. Thank you for allowing me. Thank you very much. Thank you. तुम भी चांस से लेता बीच में. स्कोर बोलना चाहिए ना. किसी ने चैट पे पूछा स्कोर तो मैंने बता दिए ने. Very nice. I like it, sir. इसलिए You're very कोई helpful, सब you तो- are, sir. Obviously मैंने भी ऐसा देख लिया तो बता दिए. मेरे को क्या है अभी. इस वक्त हमारे साथ आने वाले हैं प्रियांशु जी. प्रियांश
प्रियांशु जी, प्रियांशु, प्रियांशु, प्रियांशु आर नहीं है, प्रियांशु. I gotta get रीडिंग my eyes ग्लासेस checked. का. यस, Seriously. यस, वो ब्लर Very की वजह से funny आर दिख because रहा है, yeah. इसके लिए मैं चला गया था. But actually उसके यार, बाद ये distance पे मैं नहीं पढ़ सकता. I mean it goes blur. This is my then reading it distance, is which is normal ना, I think, na? Don't people नहीं, don't say anything? Okay, but I said Priyanshu ji, please अपना yes, thank you very much. yeah, yeah. 9:30 बज रहे उधर. कौन सा देश में हैं आप सर? आप इधर है किधर है? बैटरी नहीं है उसमें शायद. आप अरे सर तू मनम्यूट आवाज कर. आ रहा है? yes अभी आ रहा है. sir, are you calling us from within India or outside of India? अरे इंडिया में ही हुई है, देखो ये कहाँ पे अरे गई? आपका घड़ी अरे 9:30 वो बजे बाहर दिखा रहा है, छोटा सा घर के लाइट बाहर है। दिखा रहा ओ पीछे नहीं, घर के अंदर ही हो। है. नहीं सर, बट 9:30 बज रहे हैं आप जहाँ पे आप आपकी हो. घड़ी में देखिए पीछे. एक सेकंड। वो बैटरी अच्छा वो बंद है, वो बंद है। बैटरी डालना हाँ प्लीज जल्दी से बैटरी डालिए. बंद घड़ी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. अब अरे उसको बताइए. रिपेयर करने दिया, वो वापस खराब हो गया। अरे Anyway, तो बेसिकली वो जो पॉइंट है ना, बैटरी जहाँ कनेक्ट होता है ना, उसमें सुरेश प्रॉब्लम है. मेरे घर पे भी सेम ऐसा प्रॉब्लम होता है बहुत टाइम तक. वो चलता रहता है, नया बैटरी डालने फिर रुक जाता है बीच में और प्रॉब्लम हो जाता ओके है. रुको, लेकिन शुरू होने से एक पहले सेकंड। यस पियांशु एक आप प्लीज सेकंड. चेक करते हैं. मेगा चांद थैंक यू सो मच. अरे हैरी पॉटर आपको कॉल कर रहे हैं. मेगा चांद थैंक यू सो मच आपका मैसेज के लिए. पियांशु बेसिकली सुरेश. अच्छा वो कॉल आ गया बीच में, ठीक है कोई नहीं. अरे सिरिल से सीख रहे हैं सब लोग. लाइव स्ट्रीम पे नहीं नहीं आप ले लो कॉल, कोई नहीं. इट्स इम्पोर्टेंट, मस्ट बी टैक्सेस या सीए के साथ. 9:30 बज रहा है ना. इट्स नॉट लाइक इट्स 10:42. आगे वापस नहीं मेरे आई हैव टू अनम्यूट यू सर. ओके ओके यस। यस तो कैसे हो सर? मैं चल रहा है अभी. क्या अरे होता बिल्कुल नहीं. बाप रे। सांस लो डोंट वरी. होता ये नॉर्मल फीलिंग्स है. मेरे को अभी भी लग रहा है मैं स्ट्रीम ही देख रहा हूँ यार मैं। क्या स्ट्रीम? अच्छा क्योंकि मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ, मैंने सारे एपिसोड, मतलब मैंने चालू किया देखना, उसके बाद फिर डोंट एक दिन वरी. में 6-7 एपिसोड मैंने देख डाले। आप डॉक्टर ने क्या बोला है? आप ठीक हो जाएंगे कि ये बीमारी बिल्कुल कब तक? बिल्कुल, अभी मैं आ गया हूँ तो ठीक ही मतलब। प्रियांशु देखिए, धवल को थैंक यू बोलना था, लेकिन सुरेश सर बोल रहे थे ना कि लोग बोलते कि घड़ी को बंद नहीं रखना चाहिए क्योंकि आप लेट हो जाएंगे फिर. इट्स नथिंग सुपरस्टिशियस. एनीवे आगे बढ़ते हैं. चलो प्रियांशु सुनाइए. ओके सो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टोरी। ओके यस यस. हाँ, तो ये स्टोरी है ना, मैं जब अभी अभी मैं कॉलेज में हूँ, सेकेंड ईयर में, तो इंजीनियरिंग में। तो ये स्टोरी तब की है जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, महाराष्ट्र में था मैं, हॉस्टल में। तो हमारा हमारा हॉस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, और उसको कनेक्ट करने के लिए बीच में एक ब्रिज है, मतलब छोटा सा पैसेज है जो दोनों बिल्डिंग को कनेक्ट करता है। ओके, तो वो ब्रिज के एकदम मतलब थोड़ा सा ही साइड में मेरा रूम था, और मेरे रूम का जो वॉशरूम था मतलब कॉमन था, मतलब नहाने का एरिया और वॉर्मिंग का एरिया दोनों साथ में ही था। तो वहां पे मैं एक दिन कपड़े धो रहा था, क्योंकि हम जस्ट मतलब हमारा वैकेशन खत्म हुआ था तो आए थे, तो थोड़े से पुराने कपड़े मेरे लॉकर में रह गए थे कॉलेज के, तो मैं आके उनको क्लीन कर रहा था। तो मैं बाथरूम में बैठा हूँ और कपड़े धो रहा हूँ। एक दो कपड़े धोए, उसके बाद ना मैं हमारा कॉलेज हमारा हॉस्टल 3 फ्लोर का था, तो सेकेंड फ्लोर पे मैं था, और थर्ड फ्लोर पे मतलब टेरिस है। थर्ड फ्लोर पे कुछ नहीं, सिर्फ टेरिस है। और थर्ड फ्लोर पे ना मुझे ऐसा लगा कि कोई पास हो रहा है, एक दो बार दिखा मुझे, और मुझे पता था वो क्या हो रहा है। मतलब हमारा है ना, सेकेंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर जाने के लिए एक सीढ़ी है, और वो सीढ़ी को वो जाली वाली दरवाजा होता है ना जो एक्सपांड हो जाता है, हाँ, तो वैसा दरवाजा था। तो वो पूरे टाइम बंद रहता है, टेरिस पे किसी को जाना अलाउड है नहीं। तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने क्या किया था, उसको ऐसा खींच खींच के लंबा मतलब ब्रॉड कर दिया, और वहां से चले जाते थे और ऊपर मतलब टाइम पास करते थे, घूमते थे या फिर कुछ भी ये करते। तो मुझे पता था कि शायद से कोई होगा, घूम रहा होगा ऐसे। तो फिर मैंने इग्नोर किया, मैं कपड़े वापस धोने बैठ गया, और फिर उसके बाद 2-3 बार वापस वैसा सेम हुआ। तो मैंने सोचा यार इतने, क्योंकि 1-1:30 बज गया था, 1-1:30 बजे तक मैं कपड़े धो रहा था, तो मैं बोला कि कौन है इतने लेट तक। तो फिर मैं गया वहां पे स्टेयर्स के पास, देखा तो वहां पे हमारे यहाँ के मतलब जो
मेंबर स्टाफ मेंबर उनको पता चल गया था कि ये जाते ऊपर, तो वहां पे लकड़ी का उन्होंने कवर कर दिया था, तो कोई चांस है नहीं कि वहां से जा सकते हैं ऐसा ऊपर टेरिस पे। तो मैं बोला अभी मतलब जाने की कोई जगह है नहीं तो कैसे गए होंगे। फिर मैंने बोला छोड़, कोई बिल्ली विल्ली वहां से, क्योंकि आजू बाजू में काफी मतलब सिटी एरिया था पुणे में, काफी सिटी के अंदर थे, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मैंने इग्नोर किया, मैं बोला कि मैं डर तो गया था मैं बहुत ज्यादा, पर मैंने बोला कि अब कुछ दूसरे दूसरे रीजन से उसको सोचता हूँ। फिर मैं वापस गया, कंटिन्यू किया कपड़े धोना। फिर मैंने वापस वापस से शैडो देखी, मैं बोला ये क्या हो रहा है, मतलब मेरी फट गई। तो फिर उसके बाद ऊपर से जब वो शैडो पास हुआ तो एक टाइम पे मैं कपड़े धो रहा था और वो रुक गया सामने, मेरे सामने एग्जैक्ट सामने रुक गया। तो मुझे जब तक लग रहा था कि कोई लड़का ही है, लड़का ही है, लड़का ही है, क्योंकि उतना जो हमारा हॉस्टल का एरिया था वो बॉयज हॉस्टल था और उसके बाजू में गर्ल्स हॉस्टल था, तो लड़कियां कोई चांस ही नहीं वहां पे आ सकती हैं। तो मैंने देखा कि कोई लड़का ही होगा। तो मैं कपड़े धो रहा हूँ और आपको पता है ना वो बाथरूम में वेंटिलेशन के लिए वो जाली जाली मतलब जाली नहीं, वो कांच का स्लैब होता है, फिर वो वहां से वेंटिलेशन होता है, पर हमारे हॉस्टल में वो पूरा टूट गया था, तो आपको पूरा वहां से टेरेस क्लियर दिखता है। मैं कपड़े धो रहा हूँ और वहां से मुझे दिखा। तो मैंने सोचा कि क्या है, लड़का है कि लड़की पता नहीं। तो देखा तो वो मेरे सामने ही ऐसे स्टेयर कर रहा है और पीछे से मूनलाइट आ रहा था, तो मूनलाइट की वजह से वो चेहरा है क्या है कुछ दिख नहीं रहा था, पूरा ब्लैक ही दिख रहा था एपरेशन। तो फिर मेरे सामने देख रहा है वो, और मैंने जैसे ही मतलब मैंने सोचा कि क्या करूं अभी, क्या करूं, क्योंकि मेरी फट गई थी और मेरे को समझ रहा है वो चीज मेरे को ही देख रही है। तो फिर वो उसका क्या हुआ, वो ऐसे ऐसे उसने पलटा पलटा है, तो उसके पीछे से जो बाल थे ना वो, पता है लड़कियां टर्न करती है तब उनके बाल, हाँ बस सेम सेम वैसे वैसे ही उसने टर्न किया और उसके बाल ऐसे हो गए। तो मैंने सोचा अरे यार हमारे यहाँ पे लड़के हैं नहीं तो टेरिस पे मतलब ये क्या है, लड़की कहाँ से आ गई। तो वो देखा मेरी फट गई, तो मैंने फटाफट से वहां पे कपड़ा डाला, वो टूटे हुए एरिया पे कपड़ा डाला। मुझे बोला अगर मैं मुझे वो दिख नहीं रहा है तो वो है नहीं वहां पे, तो मैं इग्नोर किया। मैं सो गया वापस दरवाजा वरवाजा बंद करके। फिर मैं सोया, और वो टाइम क्या था, वो वेकेशन के जस्ट बाद था, तो हॉस्टल में ज्यादा लोग होते नहीं उस टाइम पे, बहुत 6-7 दिन के लोग होंगे, तो कोई था ही नहीं और मेरे पहचान वाला भी कोई नहीं था, तो मैं किसी के रूम में भी नहीं जा सकता सोने के लिए, तो और मेरे रूम में मैं अकेला था। तो मैं सो गया 3 बजे रात के, और मेरे रूम पे किसी ने नॉक किया, तो मैंने जाके देखा तो कोई नहीं था ऑब्वियसली वहां पे। तो मैंने दरवाजा खोला, चेक किया, कोई नहीं था, वापस दरवाजा बंद किया, सो गया। और मैं अगर कोई नॉक करे और फट से भाग के भी जाए ना, तो मुझे वो कॉरिडोर से दिख जाता कि कोई गया है, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो 2-3 बार ऐसा नॉक हुआ और कॉरिडोर में कोई दिखा नहीं, तो मैं डर गया बस, और मैंने सोचा अब कुछ नहीं कर सकते, ब्लैंकेट मुंह पे लिया और सो गया। फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं, और ये स्टोरी मैंने मतलब अभी तक किसी को बोली भी नहीं है, क्योंकि उसके उसके बाद मैं फिर भूल गया ये। अभी मुझे याद आया, मुझे कुछ तो बोलना था इसलिए मैंने फिर ये स्टोरी मुझे याद है और मैंने फिर ये हाँ स्टोरी अभी भूलने वाली स्टोरी तो लग ही नहीं रहा मुझे। बट लेकिन कपड़े आप का क्या, कपड़े कपड़े भाई उधर ही छोड़ कपड़े दिया। कपड़े उधर ही छोड़ दिए मैंने। कपड़े बाल्टी में भिगाने रखे थे, एक एक करके निकाल के धो रहा था, वो बाल्टी में ही छोड़ दिए मैंने कपड़े। इंटरेस्टिंग, उसके वेरी बाद मेरी अननर्विंग। हिम्मत ही नहीं। सुरेश सर तो ऐसे आप, अभी कब, टेंशन। अभी अभी कपड़े कौन धो रहा है? अभी अभी मम्मी वॉशिंग मशीन में, मैं घर पे आ गया, अभी हॉस्टल में, अच्छा, हॉस्टल से हॉस्टल मतलब से हाँ। घर पे आ गए। अच्छा, हाँ अभी मैं हॉस्ट अहमदाबाद में रहता तो हूँ। यार कल से कैसा आप यू विल वॉश योर क्लोथ नॉट मम्मी, ठीक है? और दूसरा दूसरा I was finding it very funny that every time he was washing clothes that somebody was just passing by looking and बराबर से धो रहा है कि नहीं, you नहीं, know? यूजुअली यूजुअली ऐसे चलते रहते हैं लोग, और बहुत ज्यादा हॉस्टल में जब बहुत सारे 100 एक जन होते हैं तो फिर वो नॉर्मल लगता है कि हाँ कोई स्टूडेंट ही घूम रहे होंगे, तो और या सिर्फ 4-5 है, तो उसमें कोई इतना बड़ा रिस्क लेता नहीं है कि चले जाते, क्योंकि किसी ने देख लिया तो फिर बैंड बज जाती है। और फिर वो ऊपर से वो घूमने के बाद वो लड़की निकली तो और मेरी ज्यादा हवा टाइट हो गई, मैंने बोला यार यार ये क्या हो गया। लेकिन कुछ बात करने का मौका नहीं मिला ना? नहीं नहीं, वो अभी लगता है कि बात कर ले, पर उस टाइम पे फिर जब अकेले होते सीधा रूम में तो कपड़ा फेंकना चाहिए था उनके ऊपर, गीला हाँ। कपड़ा। या करना चाहिए था, पर हिम्मत बोलने नहीं में हुई क्या मेरी। जाता है। एनीवे थैंक यू प्रियांशु, थैंक यू सो मच बड़ी, थैंक यू सो हैव मच। अ गुड वन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय। Funky story. मूविंग Yes, ऑन। moving on to the next stories. Huh? I was just reading about Tom Sizemore. Very nice. Abhishek, feedback. Hey, Jose and Suresh sir, love the format today where you read out a few creepy stories in between the banters. Always A class. Thank you so much for everything.
बस उतना, ठीक है. Next, all right, taking our next caller in. After that, we'll go back to the Reader's Digest article, which I have in fact dropped. Hey, गलत link है. Sorry, थोड़ा ऊपर था. My keyboard is not working properly. Must be all that chai in it. Yes, excuse me for a second. Bless you, Suresh. I'm here. I can hear. I can hear. मैं कौन है? मैं हूँ. निशांत. अरे निशांत. Hello, hello. Wait, let me try and figure out my video. I have this Just a urge second. to just show people things that I see in their houses. Nishant. मेरा है Yeah, ये, Gamer मेरा Gang represent. मेरा है ये. All right, before we start, Nishant, I'm sorry. 1 minute. Canadian Kutia, ये उनका username. Wow. बोलते we must protect Suresh sir at all costs. PS, I've always wanted to come and share a story, but Hoezaay is too intimidating. Love you guys. Oh, मैं ये मेरा बकरी का इमिटेशन था. अजीब थैंक था. यू. कनेडियन कुतिया, आप आ जाइए, टेंशन मत लो. अब मैं बात नहीं करूंगा, आप आ जाइए, डोंट वरी. एनीवे, लीव माय बॉडी. निशांत, वेलकम. Thanks, Hoezaay, for having me in. First time connecting. Probably shouldn't say Where that. do you see yourself in 5 years? Just joking. अरे वाह. Somebody said also Hoezaay and intimidating. Thank you, Sonia. I would like to be थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं respect. Ask me and Cyril when he doesn't let us speak. ये story बना सकते हैं. मैं I'll put the raw edits out of Love Advice, where you guys were just saying nothing for 2 hours. Just kidding. हाँ. निशांत, सुरेश चाय पी रहा कटोरी में. तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. रेडी निशांत जी. Ready? First of all, without taking too much time, just wanted to say big fan. We've been watching your stream since the start of the COVID period. Haven't missed an episode. Most of them live. Some of them, if I haven't been able to catch them live, I've always made sure to go back and watch the recorded stream. So thanks a lot for doing this, and thanks for having me here. Thank you. Suresh sir, big fan. Hoezaay, just glad to be on. And it's much easier. हरारमी चार्ट के साथ बैठ के कमेंट करना बहुत आसान है. Once you get on the stream, it's a little. Finally, someone said it, Nishant. As you've been part of the Harami chat, and now you're on the other side. How? कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, but nervous भी है थोड़े. उधर अच्छा है ना? All right, go for it, Nishant. Take it away. Thank you, Nishant. Sure. Thank you. So I had narrated this story on Discord one time, and I had already reached Lonavala and Panvel Cross. सब कुछ कर दिया था, but I'll try and keep this one short. So this is a story, and you guys can decide the rating. I would say it's about a 7 on 10 for me, since I experienced this personally. But you guys can decide. A friend of mine that I told this was like, "इसमें ghost किधर है?" Oh no. Okay. So that was a warning. Oh no. I believe there's a ghost, but you guys can decide. It's definitely a scary experience. Cool. So this is from the time I was studying in Shillong, and me and some college mates of mine had decided to take take the day off after our exams and go around and visit some scenic places. It's really, really beautiful in that part of the country, right? तो हम लोग पूरा दिन ऐसा प्लान करके 4-5 जगह कवर किया, and towards the end of the day we had one place parked which we were like time होगा तो जाएंगे. This place is called Sweet Falls. ठीक है? So we had probably just about considering in the northeast, in case somebody doesn't know, in general sunset tends to be a little earlier in the day. So about 5:30 it's already starting to get dark, right? So we had about 30 minutes, आधा घंटा था हम लोग के पास before it started to get dark, and we also had to get back to college soon after that, right? So we still found the time. We told our cab driver, we probably just have enough time. Let's go. We want to visit this place.
But before visiting as well, we had researched about the place. We knew very well what we were going for. And just as a trivial point there were 9 of us in the group. ठीक है? तो हम लोग गए उधर and we just about made it, and there was still about 15-20 minutes before we knew the sun was going to set. And so the way it's situated, it's deep inside a jungle area, although it is like a army cantonment area. And deep inside, after you leave the normal concrete built out roads, एक कच्चा रास्ता जाता है जो 1.5-2 किलोमीटर और अंदर जाता है, and then you have a small stairway from the parking lot that goes downwards, and you have like a viewing gallery from which you can see the waterfall. ठीक है? So the name is Sweet Falls. You can see waterfall over there, and it's really beautiful, say around the monsoon season soon after that. But nevertheless, when we went, it was still quite beautiful. So we got there probably just in time. We had to convince the guy at the main gate to let us know कि भैया हम लोग बस फोटो वोटो खींचेंगे फिर निकल जाएंगे. So he was like, हाँ अभी अंधेरा होने वाला है थोड़े टाइम में, पर आप जल्दी करना. करेंगे हाँ हाँ बस भैया बस अंदर आके फोटो वोटो खींच लेंगे फिर चले जाएंगे. So we go in, and we get to the viewing gallery. As soon as we go down the stairs, right, like the stairwell, there's a huge board that has been put up there by the authorities themselves, which says, so there's like a viewing gallery which is about ye high, matlab, it's probably waist high. You can just cross over it and then go down the slope towards the waterfall. Okay? But there's this huge signboard that's been put up with a fair warning saying, do not step over the railing, do not go towards the waterfall, it's dangerous. Okay? Now, having seen this and having read up on the place earlier before we get there, we knew not to do anything stupid. So we just stayed there. We clicked a few photographs as we had planned, all of those stupid poses everybody wants to do, and everything done. When we reached, there were about 2-3 elderly couples there, probably a family, and a few other people. And since it was starting to get dark, the folks were already starting to leave. Okay? So we also got done with our photo sessions, looking at the waterfall, appreciating its beauty, everything. But one thing we had decided कि बस यहाँ करेंगे, ऑफिस जाते हैं, खत्म हो गया. So when we are done with the photographs, we all started turning around and going back. By this time, it's almost dark, and there's nobody else left apart from our group, and there's just one lady standing in the other corner. Okay? When we turn back and start heading, she approaches our group and she says, hi, I just need a little help because something has happened. We're like, sure, what help? I mean, being just like trying to be helpful. So we ask her, what is it that's happened? So she tells us she and a friend of her had gone down towards the waterfall. Even after having seen that warning, even after knowing about the place, they crossed the railing and they went down towards the waterfall. So we were like, okay, so what happened? And she tells us she went along with a friend of hers. Later, she told us it was a fiance, but they went down towards the waterfall. She was already insisting, we shouldn't go there. It's dangerous. I already don't feel good. And then she later told us his name. She was like, Anshul, we probably shouldn't go there. It seems dangerous. And so it's like there's a stream that goes down the slope and then meets the waterfall further down. So she tells us we went down, हम लोग नीचे जा रहे थे और we reached the stream, and by that time I was already telling him, Anshul, I think it's not safe. We should turn around and go back. But he wasn't listening. He was like, इतनी दूर से आए हैं तो चले जाते हैं, waterfall पास से देख के आएंगे वगैरह.
She was like, I don't think it is safe. So she tells us, I just turned around and I came back, but he didn't. Now at this point we are all taken aback, because you've come there with somebody, you've decided to, you know, do whatever, and you just leave them alone, is it? So nevertheless, she tells us, so I turned around, I got up, I came back up, he did not. At this point we are like, okay, when did this happen? You know, what's his name? And you know, can you just give us the account of what happened, and what was the timeline like? So she tells us she got back there to the viewing gallery at around 4:15, and by this time when she's telling us this incident, about this incident, it's already nearly 5:15 or 5:30 and about to get dark. So this means an entire hour she's been standing there without asking for help from anybody but us, and not even making a scene out of it, not reaching out to try and, you know, see if there are any authorities that can help her. So we found it a little weird, just right off the bat. So we were still like, so in our minds, and this is where the initial piece comes in. We had looked up this place, okay? If you just Google Sweet Falls, you will find this is supposedly a haunted waterfall, okay? And the Wikipedia page of this place itself says, it is rumored that several deaths have occurred here, or rather, that's a fact. But it's rumored that if you go there in odd numbers, you come back in even numbers. Yeah. So that is that. Yeah. So that was a scary part, and we all knew this. So as soon as she told us about this, we were all internally, you know, whispering, hushing to each other, you know, bhai koi niche jayega nahi, koi, let's all stay together, let's try and help what we can. Meanwhile, one two folks are saying, check her eyes, check her feet, to make sure they're not backwards or something. We did all of that. She seemed like a normal person. But yeah, this happened. So then we're like, okay, listen, I think if it's been this long that you've come here and he still hasn't come back, I don't think, like, we don't think it's a good idea to stay here any longer. It's starting to get dark. It's dangerous. What we can do probably is maybe if he's lost his way, trying to come back up, we can, shout his name, let him try and gauge the direction that he needs to come up, so that if he's near about, he can come back. So we ask her his name. She tells us it's Anshul. So in chorus, we for about 4 to 5 minutes, we shout out his name out loud, so that he can probably try and hear us and get back, find his way back. So ये सब होता है. We don't get any response. It's almost pitch dark, about to get pitch dark. We tell her it's not safe for you either over here alone. There's nobody else left here. You should probably also come back with us and try and talk to a few authorities, or somebody that we can reach out for help. ठीक है, we tell her this, but सबकी फटी पड़ी है ग्रुप में कि ये बहुत अजीब है. I know Panvel is just around the corner. नहीं, हम लोग अभी we're coming on the way back to Panvel. sorry, yeah. No, so coming to the scary parts now. So we get out of there, we come back. Everybody just rushes to the cab. We've already advised her to come back up. There's nobody else around. So we are like, cab में चलते हैं. रास्ते में उधर मेन गेट पे जहाँ पे वो बंदे ने रोका था, उसको बोलेंगे कि ऐसा ऐसा हो गया, and then we can ask and have some authorities come down. So on the way we are explaining this entire situation to the cab driver. So scary point number 1. We narrate the entire incident to the cab driver. He's like, मैं तो खड़े खड़े स्टेज के ऊपर से आप सबके ऊपर निगरानी रख रहा था. ये बंदी तो कब से खड़ी है, वो आराम से स्माइल वाइल कर रही थी आपके ग्रुप को देख के. She was seemingly very normal. I don't know why she would be in trouble. But anyway, we told him the entire incident, and then he was like, very very peculiar question to ask. ठीक है, he was like, मणिपुर से थी क्या?
Yes, we told him no. She seemed like from like her facial features, she seemed like she was a northeastern lady, and that was that. Uh, then point number two, we cross that main entrance. We come out. In the army cantonment area, we're still looking for somebody that we can reach out to for help. On the way out, we see probably a captain or somebody in the army who was on their evening jog. Okay. Uh, we stopped our car. We asked him for help. We told him the entire incident कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, आप किसी को भेजिए वहां पे, probably send out a rescue party or something. Now, amidst all of this, he's making his phone calls. He asks our driver a peculiar question again कि मणिपुर से थे क्या? You're like, ये मणिपुर वाला क्या सीन है? And we asked the driver about this, and he gave us a very lame answer saying कि मणिपुर से बहुत लोग आते हैं, उनको waterfall तक जाना होता है, तो ये सब होता है. But so yeah, that was freaky part number 2. And to this day, we believe we've encountered a ghost spirit that was trying to get us to probably go down towards the waterfall, but thankfully we didn't. Oh. Did you guys have a bath the previous night? Yeah, we did. Just checking. The ghost wanted to give you all a Actually, bath. I'm slightly confused. So this Suresh, guy. it's okay if you're confused. No, one it's second. Fine, I sir. need to get I need to get to the bottom of this. We are So at the bottom only, sir. I will push it on the bottom right now. Okay, sir. Yes. Go ahead. Sir. So Nishant, I just want to know a few questions. Sir. Ek to that security guard said that he saw the lady smiling and all this stuff. Okay, and them. And then suddenly by two people asking "Oh, Manipur ki thi kya?" That doesn't discount the fact that there was a person over there. So how could that be a ghost? Probably a person, probably a ghost that was trying to get us all down there. We don't know. No, I don't But think so. It's a very It was... unusual request. We did try and get help. And yeah. One second, Sweetwater ये कहाँ पर है? Another second. One second. Sweetwater है कहाँ? 3 seconds. Which falls? Just Google Sweet Falls on Google. You'll find it. It's in Shillong. Sweet Falls in Shillong. Okay. Yeah. Suresh, we should say one more second. Thank you, Nishant. See you. Tana, goodbye. बस. Sorry for taking too much time. No. Just 2 मिनट ही निकल गया. मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना था. Hoezaay disconnect. Bye, Nishant. Take care. Cool. Thanks. Take care, guys. Thank you. Bye-bye. अरे एक चला गया. Don't distract me. I'm missing the button. Bapre, I feel like it's next Saturday. What happened? See, he was... Interesting story. Interesting story, but yeah, his friends are right. Ghost तो देखा नहीं, because even the security guy saw, है ना? काफी टाइम से वहाँ पे. Maybe she was pulling her leg. Maybe she was doing Shillong में बकरा. पानी ला Bakra. Yeah. God knows how many people's lives Cyrus Brocha has ruined by doing these kinds of ghost stories, and they didn't inform them कि prank चल रहा है. But in case anybody wants to know, whenever television shows do prank shows, they have to get us documents signed saying that हमको पता है कि ये prank है ना. Prank होने के बाद you have to get a... Suresh, thanks for backing me up. It's an NDA, Yeah, na? sorry. I'm just... Yeah, This is Suresh backing me up. Sweet Falls निकल in गया Meghalaya में. इसने शिलोंग में Suresh, बोला. stop googling these places, you crazy person. What is the main waterfall of Shillong? देखो सुरेश जी, हिमानी अग्रवाल मेरे बाथरूम के बाहर तो आल. हिमानी अग्रवाल says, Suresh sir and Hoezaay, आप कितना sweet हो. I love you to your streams and see things at night, but I love it. Miss Cyril in the streams, filing petition soon to bring him back. Cyril जी ने मैसेज भेजा, कैसा चल रहा है स्ट्रीम? मैं बोला, गाइस डोंट वरी, मैं कॉल करता हूँ तेरे को स्ट्रीम के बाद, टेंशन मत ले मेरे भाई. लीव में पड़े. करें क्या? अगर should we keep going? Pagal, 21 minutes. We have to. Every time I talk to Suresh is like this. I'm just reading. I'm just reading. Like, so, hey guys, tune into the stream. Suresh, what do you think? Sorry. क्या पढ़ रहा है? Read it out. Sweet Falls. So there is a place that local people call the waterfall dangerous, as it's believed to be haunted. It is said that if people go in odd number, they return in even.
Wow. And if you, I think Nishant has returned odd, not even. I wanted to ask him, and if you go in even, Yeah. mathematical ghost, yeah, क्या Then scene है you पता won't नहीं. meet Steven. Bloody psycho man you are. Yeah, Witchcraft scary stories. कृतिका but जी ने before the बोला था ना, कृतिका सी से गुलांटी मारो, अभी गाना गाओ, touch your nose, तो touch अभी your और एक feet. मेरे से हाँ एक्सरसाइज तेरा करवा क्या रही है है. It बाय must द be वे my क्या wife. चल रहा है क्या हाँ. चल रहा है कब से मैं देख रहा हूँ whatever she is writing she was following that to the T. Why? Not just her. There are other people also. अभी क्या No, कर? mostly her only I saw. So anyways, I'm ए very सुरेश क्या कैसे हैं? Out to get me ना, आरामखोर. Witchcraft scary. You're not allowing them to get in there. तब तक के लिए हमारे श्रोताओं के लिए 11-11. Are you ready, sir? हाँ बिल्कुल तो यार 11 मैंने सोचा कि आप इस वक्त ये पढ़ने वाले थे मैं आप बिल्कुल सही सोचे आप सर. आपका कहा जी जो आप ओह, पढ़ रहे थे सॉरी मुझे माफ करना मस्त. ठीक है. लंबा अरे यौन छोड़ लेकिन दिया वो आ गए तो उनको विचक्राफ्ट स्कैरी स्टोरी अपना कैमरा ऑन करके वापस आप बंद कर सकते हो, तब आपका ऑडियो आ जाएगा 8 out of 10. सुबह 4:30 बजे. You are somewhere from I'll tell you which place. Chikmagalur. What? You can tell from his windows? I'm loving the one of my aunts had windows like this. They're very nice Old windows. school. I love it. Really beautiful. Sir, किधर से first you have to know about the architecture. So hi Jose, hi Suresh. Big Welcome. fan first of all. Welcome. So I'm from Gurgaon basically in Delhi NCR. Good to have you, sir. I like your windows. Yeah, thank you so much. Just old kind of stuff, you know. I know that's wonderful to see. Old is gold. Yeah, exactly. So I'll straight away jump into this story, you know. So is it okay if I'll go in Hindi? बिल्कुल सर. बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं आप? So basically मेरे पास दो स्टोरी हैं, बट अभी मैं एक ही सुनाऊंगा बिकॉज आप बहुत बड़े हीरा हो इसलिए, अच्छे इंसान हो इसलिए. बिकॉज कुछ देर पहले निशांत स्वीट फॉल्स में ले गया और अपना पूरा हार्ड फॉल कर दिया. The story was good. इतना टाइम निकल गया ना. Right. So this story is basically a story जो मेरे साथ नहीं हुआ. It is a story that I've heard of. मैंने कहीं सुना था. So but I found it quite scary. Right. So this story goes around like एक couple है and both of them are wildlife photographers. Right. So they are working for some Net Geo Discovery sort of channels. So you know they got an assignment to you know get some wildlife photography captured in some forest area near Thiruvananthapuram. If that's what it is. Right? Yeah, Thiruvananthapuram. Yeah, exactly. So you know, तीन लोग जाते हैं उसमें and another assistant is there. So all three of them, you know, goes to that place. अब उस place में like forest area में you know there are cottages or resort sort of places. So they need to stay there. And उस cottage में there is no one living. Just one caretaker रहता है वहाँ पे and all these three people are there. Right. So one day what happens is on the second day all three of them goes to the forest area to you know capture some wildlife. Then what they usually they found out that around the forest area 2-3 kilometers down the line there is a fencing. Okay. Right. So fencing देख के वो लोग बस fencing तक जाते हैं, कैप्चर करते हैं जो भी उनको वाइल्ड लाइफ दिखता है, then they come back. And towards the day end, caretaker usually what he does, वो पूरे दिन ध्यान रखता है, उनके लिए खाना पीना बनाता है, and towards the day end, towards the sunset, वो अपने घर चला जाता है. Like he doesn't stays in the resort, right? So जब caretaker जा रहा था तो you know इन तीनों ने caretaker से पूछा like we went into the forest and we found there is a fencing. So what is the you know purpose of that fencing? Is it because of the wildlife animals or something? So केयरटेकर थोड़ा सा डर गया. उसने उनको बोला लाइक इन एनी सिनेरियो आप अगर कल भी जाओगे तो डू नॉट क्रॉस दैट फेंसिंग. राइट. सो उन्होंने रीजन पूछा उससे, उसने रीजन उनको नहीं बताया. राइट. सो नेक्स्ट डे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं आप. सो जो कपल होता है, मैरिड कपल हु आर द यू नो मेन फोटोग्राफर्स, सो वो फेंसिंग क्रॉस करके जाते हैं एंड दे यू नो कैप्चर्स यू नो क्वाइट अ brilliant photographs. So when they come back
towards the end they tell the caretaker that हम लोग आज fencing cross करके गए, कुछ भी unusual हमारे साथ नहीं हुआ, so what is the purpose of that fencing, right? So caretaker थोड़ा गुस्सा हो जाता है उनके ऊपर and he tells them कि उसके पीछे एक story था, like around 60-70 years back. So वहाँ पे बेसिकली गांव था एंड उस गांव में लाइक एक अनयूजुअल चीज होती थी, लाइक वहाँ की जो यंग लेडीज होती थी या बच्ची होती थी, सो वो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो गई एंड villagers found out that there is a lady and she you know does that witchcraft sort of thing. वो यंग लेडीज को कैप्चर करती है एंड उनकी एज ट्रांसफर करती है खुद के अंदर, राइट, एंड शी किल्स देम. सो व्हेन द विलेजर्स फाउंड आउट दैट, तो उन्होंने उसको पेड़ से लाइक प्रॉपर बांधा, दैट इज अ स्टोरी. उन्होंने पेड़ से उसको बांधा एंड उसको जला दिया. सो व्हेन शी वाज डाइंग, शी बेसिकली यू नो कर्स द एंटायर विलेज दैट आई विल नॉट लिव दिस प्लेस, मैं हमेशा इस जगह को हॉन्ट करूंगी. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स गांव वालों ने पूरा गांव खाली करके फेंसिंग कर दिया सो दैट नो वन क्रॉसेस दैट फेंस, राइट, और सब लोग वहां से चले गए. नाउ दिस इज द स्टोरी. केयर टेकर देन उन कपल को और जो असिस्टेंट होता है उनको बोलता है लाइक आज डी एंड पे या नाइट, आज आज रात को अगर कुछ भी आपके साथ अनयूजुअल होगा सो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो, बट आई विल कम इन द मॉर्निंग, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सो व्हाट हैपेंस ऑन दैट नाइट, सो जो हस्बैंड वाइफ है, जो कपल है, दे हैव अ सेपरेट रूम एंड द असिस्टेंट हैव अ सेपरेट रूम. सो हस्बैंड एंड वाइफ आर स्लीपिंग ऑन देयर यू नो बेड एंड सो उनके रूम में लाइक सिंस इट इज अ फॉरेस्ट रिजॉर्ट, सो एज सच कोई लाइटिंग वहाँ पे नहीं है. देयर इज अ आई वुड से लैंटर्न जस्ट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द रूम, राइट. सो बहुत डार्क रूम है, पिच डार्क. एंड रात को एक अनयूजुअल चीज होती है दैट हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बेड पे होते हैं एंड हस्बैंड मतलब बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, वो दे आर क्वाइट एग्जॉस्टेड एंड द मोमेंट दे यू नो वेंट ऑन द बेड दे जस्ट स्लेप्ट. सो उसके बाद अनयूजुअल चीज थोड़ा सा ये होता है कि हस्बैंड को अपने कान में काउंटिंग सुनाई देती है, as if someone is counting. So counting was started, you know, it started from 1 2 3. So he woke up. उसने अपनी वाइफ को चेक किया, she was not there, right? So he thought maybe she went for the washroom or something. So still the counting was going on. It is around 10 11 12, right? So अब वो अपनी वाइफ का नेम कॉल आउट करता है एंड द काउंटिंग स्टॉप्स, राइट. फिर वो वापस सो जाता है. नेक्स्ट मोमेंट व्हेन ही वेक्स अप, so now at this point of time counting is around thousands, so it goes around 1001 1002 1003 and something, right. So इस पॉइंट पे उसको थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है. देन ही वेक्स अप अगेन, वो अपनी वाइफ को थोड़ा रूम में इधर उधर देखता है बट शी इज नॉट देयर, राइट. फिर वो उसका नेम कॉल आउट करता है. नाउ ही गेट्स अ रिस्पॉन्स in his wife's voice, right, कि I am here, right. Counting is stopped, but he is getting a response in his wife's voice. So उसके बाद वो सो जाता है. Third time, same instance. Now the counting is around 28,000, 28,001, 28,002, right. At this point of time उसको थोड़ा सा creepy लगता है, डर लगता है. So वो रूम के कॉर्नर पे चेक करता है, so there is a figure standing there, just below the lantern. So he straight away goes into that direction just to check कि उसकी वाइफ वहाँ पे कर रही है, because he thought that it's his wife, right. So वो उस कॉर्नर पे जाता है and the moment that figure turns, तो वो basically वही बिच होती है and you know पूरा फेस पेल एंड बाल बिल्कुल फैले हुए हैं. उसके बाद he just you know passed out. So next day morning में क्या होता है कि केयर टेकर कम्स, उसको उठाता है, पानी वानी गिरता है उसके मुंह पे एंड उसको उठा के लाइक फर्स्ट थिंग ही आस्क इज कि मेरी वाइफ कहाँ पे है. तो केयर टेकर उसको बोलता है कि सर आप मेरे साथ पहले आओ. तो वो उसको बाहर जो एरिया होता है वहाँ पे लेके जाता है. सो हिज वाइफ्स बॉडी इज देयर, राइट, एंड उसकी वाइफ के हेड पे देयर इज नॉट इवन अ सिंगल हेयर. So that counting was basically the witch was plucking each and every hair from head of his wife. So that is the reason. So caretaker उसको बताता है कि I told you कि आप वो क्रॉस मत करना, and that is the entire story. सुरेश के साथ सिमिलर चीज हुआ है. Therefore he decided to go. But thank you sir for sharing that story with us. No issues. Some people are saying they've heard it on other streams also. Yeah, ये वाला yeah, story, yeah. ये प्रिंस सर का story है क्या?
Yeah. Pretty It's well. All right, so I thank have you so much. another story as well जो मैं अभी बात की किसी स्ट्रीम में सुनाऊंगा. That is a incident that happened with me. So I've अरे shared it पहले for वो that. सुनाना चाहिए था, मैं दूसरों का स्टोरी फिर मत सुना. नहीं अभी क्या कर प्रिंस रहे सर हैं मेरे को कॉल करके गाली देगा. अभी मैं क्या बोलूं प्रिंस सर को. एनीवे इट्स जस्ट अ स्टोरी तो ठीक है, बट थैंक यू सर. आपका नाम क्या है? My name is Chirag. चिराग. थैंक यू चिराग चिराग. बोलो चिराग. एनीवे चिराग, थैंक यू सो मच बड़ी. हैव अ गुड वन. Can I click a picture once? हाँ एक सेकंड थे, एक मिनट थोड़ा. हाँ. सुरेश Thank you so क्या much, guys. लुक दे रहा है. चल ठीक है, बाय. Thank you so much, guys. Thank you. बाय ब्रो. Where's the button? And टेक्निकल सुरेश जी का दोस्त यहाँ पे. You can also do Windows print screen if you're on a computer. Otherwise ये पिक्चर ले सकते हैं इससे. तो सुरेश जी शुक्रिया, मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया अदा करना Still 8 चाहते हैं minutes बिल्कुल. left. ओ 8 मिनट तो और कहानी सुनेंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा. सुनाइए, सुनता हूँ आपको एक बार. लेकिन Yes sir. I was just little bit see this seems to be more like a folklore than Yeah. वो कुछ वैसा हुआ लगता तो है. 100% कुछ हुआ ही हुआ. It's like what do you call that? Urban legends. Urban legends. Yeah. All right sir, here we go. Oh This my is from God. that article which I dropped. Seth has got a very painful question. I don't think anyone wants to answer you. क्या हुआ Thank you, सैफ? बोलो Seth. सैफ. वाओ. Anyway. सुरेश सर oozing Oh, sexiness किसी ने लिख really? दिया. Cyril My Perez. keyboard is not My working, God. so मैंने नहीं किया. All right, next story, Suresh. That is Cyril. The boy with no eyes. One night when I was 10, I was woken up by my bedroom door opening, followed by someone sitting on my bed. Reddit.com user KMendo4 recalls of a childhood brush with a very persistent, ghostly apparition. I felt my leg grazed and the bed sink under a person's weight. It's just mom, I thought, and I opened my eyes. It was not mom. I found an eyeless boy. He had black, empty sockets about my age sitting at the foot of my bed. He extended his hand, and in it was a little box. I was startled but reached out. He pulled back. I reached again and said, "Give it." Then I blinked, and when I reopened my eyes, he was gone. But I could still see the imprint where he sat on my bed. Holy shit. Fast forward 5 years, my girlfriend came over to do homework. After she finished, she took a nap while she waited for her parents. When she arrived, I tried waking her up. She opened her eyes suddenly, looking up at a corner where the wall met the ceiling. She pointed there and went back to sleep. I shook her again. She came to full consciousness, and I explained what she'd done. She looked haunted. Up on the wall, I saw a little boy with no eyes. He was there, staring at me. I freaked out and told her my story about the same kid. Shit. Fast forward another 5 years. I was with the same girlfriend, good loyal person, and we had a 2-year-old. We were living in my parents' house in my old room. My daughter started waking up at the same time every night and she'd talk. After a while, I noticed she had almost the same conversation every night. I playfully asked her once whom she was talking to. She said, "It's a little boy. He's nice. He's lost and looking for his mommy." My daughter's nightly conversations continued until we got our own place later that year. बाबा रे बाबा, ये बच्चे लोग ऐसे करते थे मेरे साथ. सुरेश जी, how are you feeling? Hi, Parigi. तेरा How are you? माहौल. SJ, grey suits you, so will I, my darling, tempting. SJ, oh, I forgot. I keep imagining it's just a regular super chat. This is वो flirty वाला super chat जो होजे जी को भेजते हैं. हाँ बोलिए क्या हो? SJ says, grey suits you, so will I, my darling, tempting. आप भी ग्रे कलर के हैं क्या? चलो ना. Let's keep going. Okay, 5 minutes left, Suresh ji. And I'm very sorry, but today I cannot. I was just going to say I had to deliver my urine sample, but आपने already ले लिया. So we can continue on the stream. Yeah. What the hell, Suresh?
Why you let your intrusive thoughts in there? Why did you do that? This is such a great conversation discussion, though. Stop it. So, Stop, you fucking psycho. in a view, there are no animals like cattle kept anywhere in the world. There are only men. Stop it. No, So they no. discover urine Stop is the it. best cure for any ailments, and including COVID or whatever diseases come. So all men are now stung up like cattle. People were fantasizing all kinds of crazy things during COVID, saying that the cure. What if it's some people saying, "Arey, weed is the cure." Some people saying, "Arey, what about urine?" All it's all you only, Suresh. Yeah. I think that's it for the night. We should. बड़ा घूंट ले रहा है. It's enjoyable. How can we do the same thing every time? This is ridiculous. Anyway, we're done with tonight's stream. I'm honestly, I'm done with life in general. Forget the stream. What's up, Hey, chodo? ऐसे But मत बोल रहे. just Why joking. you talk like that? Yeah. No, I mean, I'll take a nap and then I'll wake up and start again. हाँ. The rest of the people, Jaipur Rail Incident, trying for the last time, Fake Cyrus, Sagar, we'll try to bring you in next time. Thank you, everyone who joined us. Please come over to our Discord server. I'm very, very sorry. I was getting my hip replacement and I was donating urine very often. So I've not been active on the Discord server, but now I'm back, supposedly. And hopefully we'll keep doing things over there. We're going to start Ki Utsav. Suresh, if you don't know what Ki Utsav is, it's not for you. You can tell your son, though. We're giving game keys, video game keys. Oh. In the gaming scene. So Okay. you can also try. So you can try for it. We're going to be doing a Ki Utsav on our Discord server and on YouTube. कुछ और बोलना था सुरेश तेरे को? नहीं, मेरे YouTube चैनल पे आइए और बहुत सारे मजेदार फिल्म्स एंजॉय कीजिए. I wanted to ask you about that. चैतन्य की नहीं मिस किया तुम्हारा सुपर चैट इधर आओ. ये लो चैतन्य आपके लिए. तो सुरेश sir, I saw that you're uploading full movies to your YouTube channel. Yes. Legally? So legally, very legally. I've tied up with a company who's got these huge catalog of movies, so there'll be a lot more coming in. Suresh's CEO voice. And a lot of people did. There was YouTube में copyright का कुछ claims आया था, but it's all the dispute में submit करते वो सब clear हो रहा है. So अच्छा है, they got the rights and we got the YouTube channel that I'm offering to them. We'll talk about it some other time. Anyone who tuned in is like, this is very confusing. Please watch. थोड़ा dubbed है, थोड़ा प्यार दो, चढ़ा के देखो. फिल्म में मजा नहीं आया तो भी at least subscribe तो करो. Yeah. Please subscribe to Suresh Menon's YouTube, his building society member. और pirated बिल्कुल नहीं है NIS. Thank you. Yeah. नहीं सुरेश ने properly किया है ना. Pirated Suresh. Acha, you mean I look like a pirate? It does look illegal, but it's on Suresh's channel very legally. The Suresh Menon official channel. So if anyone's wondering if that's not Suresh's official channel, Suresh's official channel. Everybody go to Cyril's Instagram and just send him some hearts and some bum peaches and all saying, Kidhar tha? Pretend to sound angry and then be like, Arey, we love you, Cyril, aaja वापस ना. थोड़ा हवा आंदे उनके ऊपर ना सुरेश? क्या बिल्कुल हवा आंदे. मैं हवा आंदे बोल रहा हूँ. मैं अभी देख रहा था. That's it. आज के लिए बस. Not illegal, man. I actually have to leave. Also कुछ काम है नीचे मेरा गाड़ी के साथ. So thank you everyone. Have a good weekend and hopefully this coming week is going to be crazy. I went shopping for a bucket, a UV light, ping pong ball, Suresh, and a rubber ducky. Oh. You'll see them on my Instagram and my YouTube shorts soon. So take care. Have a good one. Okay, take care. And my new favorite game is Project Zomboid. Chalo bye. Yeah, bye. Nobody cares. Bye. Harami chat. कैसे लोग हैं? कैसे लोग क्या टाइप करते? Take care. आ जाओ Discord में. Bye Suresh. Love you. Bye. Bye. Take care. Bye. You thought it was over, but someone was right. They said 11:30 अभी तक बजा नहीं है. So it's not fair for us to leave. Another 17 seconds, Suresh. They're right about it, you know. अरे बाप रे ऐसा है. You are like the salty parts. वो चीज ज़्यादा खाया लगता है. I think किसी ने बाद में mix किया चीज उसमें. चीज नहीं आता. Take care everyone. Have a good one. Anything else, Suresh? Good weekend. सब वो same चीज. Same चीज. Repeat. अच्छा करो सब लोग तुम लोग. Love you all. Take care.
Bye bye. Push button. Push.